and discuss our IPC, Indian Penal Code. It will take 2 classes because it's a huge code. Probably you will not be able to complete in one class ever. So 2 hours today, 2 hours probably today, or maybe tomorrow will take 2.5 hours if possible, and complete this IPC. Okay. Again, we can't take any doubts because at one stage we have to complete it. So yes, when the IPC will be taken in a regular course, you may ask the doubts. Right now it's going to be only a marathon way of completing it. Okay. Yes, the screen is visible, I hope. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So coming to the IPC, Indian Penal Code. When did it come into force? It came into force in 1860. 1860 is the time when it came to being. Lord Macaulay is the father of IPC, and why in 1860 it was made is because of this beautiful 1857 Sepoy Mutiny or Revolution of 1857. Then Britishers realized that if there is no law which is governing the Indians in general, then what will happen is that we may not be able to control them. So, in order to get over the fact, they have in fact made sure that uh, the IPC was made. IPC was made. Okay, so that is the reason IPC was made in 1860 after extensive research, and Lord Macaulay, being the father of IPC, made IPC. Okay, it was enacted on 6th October. It was enacted when? It was enacted on, enactment date is 6th October, 6th October 1860, and it came into force when? It came into force. When did it come into force? Tell me. Yes, where is it? I think I've written it. Wait. Okay. Where is it? Came into force. Who can tell me when did it come into force? 1st 1st January January 1862. 1862. Yes. Okay, yes. 1st January 1862 is the date when it came into force. Okay. Now, yes, let's discuss the IPC in general. So it extends to the whole of India other than the Jammu and Kashmir. But right now, Jammu Kashmir is also included because the 2019 Jammu Kashmir Restructuration Act made sure that Jammu Kashmir is also included. Previously, Jammu Kashmir was being governed by the other penal code called Randir Penal Code, but right now it is governed by IPC only. But of course, then again, we tend to substitute the same by virtue of Bharatiya Nyaya Sanhita, that is BNS. Okay. Now, uh, Section 2 says that every person, whether he is an Indian or a foreigner, if he has committed an offense within the territory of India, or he is situated outside India but does offenses like abetment to conspiracy, which is directly incidental in India, then in that case he'll be liable to punished. So it is talking about the territorial application of IPC. Section 2 talks about the territorial application of IPC. Similarly, Section 4 talks about the extraterritorial application of IPC. What does it say? That any citizen of India in any place without and beyond India, what is citizen जदि इंडिया बाहर थिबो ताहेले से कोन करि परिबो ताकू आपण लायबल करि परिबे अंडर रे जदि सिटीजन हे कि बाहर किछ ऑफेंस करछि आउ कोन जदि गोटे शिप और एयरक्राफ्ट जोटा कि इंडिया रे रजिस्टर्ड हेछि सेथरे भी जदि एनी पर्सन किछ ऑफेंस करछि ताकू भी आपण लायबल करि परिबे भावंतु कि फ्रांस रे गोटे चाइनीज पर्सन बसी कि इंडियन शिप रे गोटे ऑफेंस करूछि धरा जीवो जे एज इफ से इंडिया रे करछि और ताकू हमें पनिश कर परिबा. That is what the extraterritorial application of IPC
is about. Okay, and any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India जोदि कि साइबर क्राइम रे आपण बाहर बसिकी इंडिया रे गोटे कंप्यूटर रिसोर्स को टार्गेट करचंती ताहेले भी you will be liable, so that is called extraterritorial application. Okay, next coming to the general explanations कौन कहला आसला फर्स्ट जे every offence in IPC is subject to general exception ता माने आपण जदि भी जेते भी ऑफेंस अछि जदि जनरल एक्सेप्शन रे पडुची ताले सेटा ऑफेंस होबो नाही जोटा कि हमें डिस्कस करबा जनरल एक्सेप्शंस रे. Okay, that has to be read with section 105 which says that burden of proving 105 of Indian Evidence Act which says that burden of proving that case of accused comes within the exception is on the accused himself. So accused has to prove that yes, it comes within the exception. That's the reason he shouldn't be liable. Okay, otherwise you cannot escape that liability. Section 6 says that. Section 7 says explained in any part means meaning in every part. Okay, so if a meaning has been given or explained in one part, then it will have or bear the same meaning in all parts of IPC. That's what section 7 says. Section 8 talks about gender, he includes she. Section 9 talks about number, singular includes plural and vice versa. So if it has written he, then that will mean they also, and if it has written they, then it will mean he also, and if he has written he, then it will include she also. Now section 10 says man means man of any age, woman means woman of any age. Whether a dead man can be called a man under section 10, who can tell me? A dead person can be called a man? No, sir. No. Yes. So of course there is an offense against the dead body which can be committed under IPC also, but he will not be called a man or woman for that matter. He has to be a man of any age. That means he must be living. Okay. Section 11 says person includes company, association and body of persons. Of course it includes the normal persons. With that it includes the juristic persons as well. Section 12 says public means any class of public, and section 12 says public means any class of public, and then 13, 14, 15, 16 all are repealed. 17 is government. Okay. Now 18 is India. This is not, definition is not important, but you may remember the sections because it might be asked. 20 is court of justice, and then coming to public servant, which includes army, justice. Now that means army means any commissioned officers of army, naval, air force. Justice means judge, officer of court, jury, assessor or arbitrator. Now any a person who can confine or prevent offences, confine any person or prevent offences, they will also be public servant. Any person who can conduct survey of property, who can deal with election, who can deal with common interest, those will also be included in public servant. And others, that means if they are under the pay of the government and service to the government, then they will also be known as public servant. Okay. Now 22 says movable property. 22 says movable property. 22 is movable property. Next, 23, wrongful gain and wrongful loss. Wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. A is holding a property, he is not legally entitled to it. Whatever is gained is called wrongful gain. Now, B was entitled to that property, but he is not holding it. A is holding it, and he is taking certain wrongful gain. Then that B is also sustaining wrongful loss. So loss by unlawful means by property to which the person losing is illegally entitled. Now coming to section 24, which says dishonestly. What does it say? Act done with an intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person. Okay, so anything you are doing with an intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person, then that is you are having
the you are doing it dishonestly. So the mens rea must be there, and mens rea of what? The mens rea of causing wrongful loss or causing wrongful gain. Okay, causing wrongful loss or causing wrongful gain. Just a second, guys.
Okay. So, yes. Now coming to dishonestly. Dishonestly will be what? Dishonestly is act done with an intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another will be called dishonestly. Now, fraudulently is again with the intention of defrauding others. So there is a malified intention, but that is with the intention of defrauding others. Then that is called fraudulently. Section 25. Section 26. The reason to believe. Anyone has a reason to believe if he has sufficient cause to believe that thing, but not otherwise. Okay. So the important factor is sufficient cause. If he has a sufficient cause to believe that thing, but not otherwise, then that would be the reason to believe. So sufficiency of cause is the main test. Then only it will be said that it has a reason to believe. Okay. So intention, knowledge, and then comes reason to believe. But intention is the highest degree. Knowledge is then the middle part, and reason to believe is the lowest degree. Lowest degree. Okay. So that is what it says. Now coming to 28, that is counterfeit. Counterfeit, what does it say? That is with respect to a manufacture of document read with section 463, you have to consider. Okay. Then next is somebody has not joined. Rebati, are you there? Rebati, you have messaged for joining. Have you joined already? Yes, sir. Yes. Okay, okay. So next, section 32 says electronic document. 29A says electronic record. Now section 32 is act includes illegal omissions. Every act will include illegal omissions. So if A is giving poison to B, that is an act. But A is not giving food to B, then that would be illegal omission. Now, Section 33 is act includes series of acts, and omission can include series of omissions as well. Okay. Now coming to Section 34. Section 34 is common intention. Of course, it is very important for the point of view of mains, but for the prelims, you just have to understand if the concept that is that acts done by several persons in furtherance of common intention. So common intention means here meeting of mind. Now meeting of mind can be instant also. So you instantly it can be done also. That means instantly also it can be done. Okay. Now if an offense is done in furtherance of common intention, and in fact the offense is done by one member, then other members who have actively participated will be liable as well. The famous case is Mehboob Shah versus Emperor. Okay, here a constructive liability is fixed, and here joint trial be given under section 223 CRPC. Okay, so any person who commits an offense and others are linked to that person in such a manner that it can be said that they were mutual agents of each other, then the act done by one of them may make the others also liable. Okay, so as I told you, meeting of minds must be there. So common, they must have agreed to do it before the offense, and then only it can also develop at the spot. But if it has developed, then all of them will be liable. Of course, there is a difference between 34 and 149, which you need to understand for the point of means. Now, section 39. Section 39. Section 39 here voluntarily. Voluntarily means if he has knowledge or he has reason to believe or he has intention to cause the effect, then it will be done. Then it will be called voluntarily. Voluntarily, section 39. Okay. So intention to cause, knowledge, and reason to believe. Three things will come under voluntarily. Intention to cause, that is voluntarily. Knowledge that it is likely to cause, that is also voluntarily, and reason to believe that it is likely to be caused, that is also called voluntarily. Okay. So suppose from the first floor you throw someone, then that is will be called, yes, you had the intention. Now, uh, uh, you know that so here it will be.
desire. No, but let's not discuss the details. Okay. Now coming to knowledge. Knowledge is, it is awareness of the person about the consequence of the act. Now, when the act is done with the knowledge of likelihood of a consequence, the conduct of the accused is more casual and not pinpointed as to produce the consequence with certainty. Now, two more things are important here. One is motive and intention. Motive and intention. Okay. Now, motive is what? Motive is the ulterior reason why you are doing it. Now, intention is immediate. Okay, intention is immediate. I have the intention of killing you, but why am I having that intention of killing you? Because I think that after you I may inherit your property. That is the motive. Okay, so knowledge is just being aware of the consequence of the act. Motive is the ulterior reason, whereas intention is the immediate reason why it is done. Okay, so knowledge is the least degree of mind, but intention is higher degree. Okay, that is what is there. Now coming to offense, section 40. Section 40 says that if a thing is made punishable under this code, and why is that made punishable? It's because of a consequence of an act or omission, then in that case it will be an offense. Okay, so for an offense to be an offense under IPC, it has to be punishable by IPC. If it is punishable by other acts like POCSO, NDPS, those will not be offense, at least under IPC. Now coming to illegal. Illegal, illegal is section 43 says that what is illegal? Illegal is anything if he is committing an offense, then if he is doing anything which gives rise to a cause of action, that is civil wrong, that is also illegal. And if he is doing something which is prohibited by law or any other law, that is also illegal. And if he is legally bound to do something, then, and if he is omitting it, then that is also illegal. That is also illegal. A jailer has to feed the inmates. If he is omitting it, that is also illegal. Okay. 44 is injury. Injury is what? Any harm whatever illegally caused to any person. Any harm whatever illegally caused to any person, and it signifies the conduct of that person, and the injury is caused to the body, mind, reputation, or property, then that will be called injury. That will be called injury. Now coming to 52, good faith. Good faith is, the essential is logic and a reason. Logic and a reason, and there is a intention. It is done with good intention, that is done with due or reasonable care, with expertise or skill, and then in that case it will be good faith. It will be good faith. Okay. Similarly, other things which are important is important, which you may just remember the numbers, is 30 valuable security. 30 valuable security, and then uh, 45 is life, and 46 is death. Life means life of a human being, death means death of a human being, and 47 is animal. Okay. 48 is vessel, and 51 is oath. These are some important sections. 52A is harbor. What is harbor? If it with the intent, with the you are harboring someone, when it will be called harboring someone, when you are making sure that he is evading the apprehension. Evading the apprehension, then that is called harbor. But of course, husband can always give harbor to wife, and wife can always give harbor to husband. That will not be that will not be that will not be an issue. No issues. So the harbor can be given either by husband to wife and wife to husband. Okay. Next is next is punishment. Next is punishment. Okay. So coming to chapter 3, that is punishment. How many types of punishments are there? Death, life imprisonment, imprisonment for life, imprisonment for life, and then imprisonment for simple imprisonment and rigorous imprisonment, forfeiture and fine.
Okay. Now, of course, there are now. If you say how many types of punishments are there, you'll say 5 because the transportation of the punishment that was there, that has already been done away with. Okay. Previously, he was being transported to Kalapani, so that is also done away with now. So that's not there anymore. Okay. So death, life, rigorous and simple imprisonment, forfeiture of fine, and forfeiture of property and fine. So 1, 2, 3, 4, 5. These two are called one because it is imprisonment. Which nature? That then it can be rigorous or simple. Okay. Now, Section 54 says that appropriate government can commute the sentence of death. So commuting is in fact decreasing it or changing the nature of it. So death sentence को से को भी अलगा sentence रे appropriate government change कर देई पारिबो. 55 रे कहला life imprisonment को केते पर्यंत commute करि हबो 14 years पर्यंत you can commute it. That also can be done by appropriate government. But 57 रे कहला जेतले fraction of life imprisonment calculate करियार अछि, then in that case you consider it as 20 years. You consider it as 20 years. 56, 58, 59, 61, 62 all are repealed. Okay, all are repealed. Next, asila 65. 65. Okay, 65 कौन जे यदि imprisonment दिया है ता सହିତ fine दिया है and fine रो default रे किछि punishment दे छि ताले केते देई हबो 1/4 of maximum punishment देई हबो. That's what 65 says. Now 66 कहला तारो description कौन हबो 66 रे कहला सेई जो imprisonment देबे for non payment of fine तारो description कौन हबो कहला और 67 कहला जोठी fine only दिया है छि जोठी fine only दिया है छि सेठी आपण imprisonment कौन देबे non payment पई जे up to 50 rupees हले maximum 2 months, 50 to 100 हले maximum 4 months and 100 को exceed करले maximum 6 months. Just a second. Okay. Now 66 रे कहला जे डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट रो डिस्क्रिप्शन कोन हबो 68 रे कहला जे आपण यदि डिफॉल्ट इन पेमेंट जोटा पनिशमेंट दिया हितला सेटा जतले पेमेंट हे जिवो then the imprisonment will be terminated. That's what section 68 says. 69 रे सैला कहला यदि प्रोपोर्शनल पेमेंट करिवे ताले भी imprisonment टर्म टाको रिड्यूस करा जिवो बोली कहला 5000 दिया हिची 5000 रो इन डिफॉल्ट रे दिया हिची 3 मंथ्स तो सेतरे को आइची जदी से 2500 देला तले प्रोपोर्शनली आपण रिड्यूस कर दे बोली कहला. सेक्शन 70 रे सेमति कहला जदी फाइन इंपोज हेची ताले केति केतेले रिकवर हबा 6 इयर्स ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर भितरे फाइन टा रिकवर हबाकू पड़िबो. 71 रे कहला जदी सेवरल ऑफेंसेस अछि ताले पनिशमेंट केम देबो जोटा हमें सीआरपीसी रे सहित पढिथिले जे आपण जेतेले कोन देबे कॉन्करेंट इज द रूल और कॉन्जिक्यूटिव इज द रूल. हु कैन टेल मी? Concurrent. Consecutive. Yes, consecutive is the rule, but যদি কোর্ট কହୁଛି যে সেটা concurrent তাহলে concurrent କରିପାରିବ. Concurrent মানে one with the other, but consecutive is one after the other. ସେମିତି 72 ରେ କହିଲା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାହଲେ lowest punishment ଟାକୁ ଆପଣ ଦେବେ because that will be important. Now coming to solitary confinement. Solitary confinement କଣ କହିଲା ଯେ solitary confinement କହିଲା 73 ରେ 74 ରେ କହିଲା limit ଟା କେତେ. Solitary confinement कौन कहला maximum दे परिबे 3 months in the whole
आपण मैक्सिमम दे परिवे बट जदी 6 months imprisonment up to अछि ताले 1 month पर्यंत solitary confinement दे हबो आ 6 month ru 1 year imprisonment अछि 2 months दे हबो more than 1 year हेले 3 months दे हबो आ लिमिट केमती माने अटेस्ट स्टेज केते दबा से कहला अटेस्ट स्टेज से केबे 14 days एक्सीड करिवो नाही बट जदी मोर देन 3 months imprisonment अछि ताले solitary confinement 3 मास गला परे तापरे अटेस्ट स्टेज 7 days रो अधिक भी एक्सीड करिवो नाही इन ए मंथ तो 7 days एकथरे दे हबो ताठू तापरे 3 months परे फर्स्ट 3 months जाय दे हबो केते 14 14 14 करिकी तापरे 3 months परे 7 7 7 करिकी दे हबो तो भाबंतु जदी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सपोज दिया आइची टोटल केते दिया आइची सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया आइची टोटल 3 months रो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया आइची काहे ना हम देतले मैक्सिमम दे हबो 3 months सेटा पडले 73 रे तो एबे देलाळू केम दिया हबो आगे दिया हबो 14 14 14 जनवरी रे 14 फेब्रुआरी रे 14 मार्च रे 14 ए 3 मास परे तापरे चालिबो 7 एप्रिल रे दिया हबो 7 मे रे दिया हबो 7 जून रे दिया हबो 7 ओके तो एठी केते एठी वाला 2 months तापरे जून रे 7 पुनी जुलाई रे दिया जीवो 7 अगस्त रे दिया जीवो 7 आउ तापरे कोन सितंबर रे दिया जीवो 7 आउ जहा बाकी रही गला केते 1 1 1 3 3 ता सहित 1 4 5 6 और एगला केते अक्टूबर रे दिया जीवो 6 टोटल एते 3 months ता एमिति दिया जीवो बोली कहूची जे सेटा दैट्स व्हाट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एमती दिया पड़ो फर्स्ट 3 मास रे 14 14 तापरे 7 तापरे 75 रे कोन कहला जदी एनहांस्ड पनिशमेंट किछि एवं गोटे किए करूची कोथरे लायबल हबो एनहांस्ड पनिशमेंट पई जदी चैप्टर 12 और चैप्टर 17 रे से ही कैन बी सब्जेक्टेड टू एनहांस्ड पनिशमेंट बोली कहला कन्विक्शन प्रीवियस कन्विक्शन परे जदी आउथरे से करूची देन एनहांस्ड पनिशमेंट पई से सब्सिक्वेंट माने सब्जेक्ट टू हेई पारे नाउ कमिंग टू जनरल एक्सेप्शंस रे कोन कहला जे कहला जे एवरी ऑफेंस इन आईपीसी सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन और 105 रे भी कहला जे बर्डन ऑफ प्रूफ काउ परे अक्यूज्ड परे नाउ विथ दिस इन माइंड हम जानिबा जे एबे जनरल एक्सेप्शंस गुडा कोन इनफेंसी देला 82 83 नाउ जस्टिफाइबल एक्ट 77 78 कंसेंट 87 to 92 कम्युनिकेशन 93 ड्यूरेस 94 unsoundness 84 private defense 96 to 106 trifling act 95 accident 80 intoxication 85 86 mistake of fact 76 79 necessity is 81 total 76 to 106 होची हमरो general exceptions ता भितरे private defense भी जाउची so section 84 कोन कहला जे unsound mind कोन कहूची at the time of doing the act or omission because of the reason of unsoundness of mind jodi se incapable of knowing the nature of the act or whatever he is doing either is that is wrong or contrary to law then in that case taku ame kaheba because if he is suffering from unsoundness of mind he will not be liable boli kahela this is the general exception jothre ki because he is knowing the incapable of knowing the nature of the act then if he is whatever he is doing or he's what or he doesn't know that whatever he's doing is wrong or contrary to law then that becomes a defense and he will not be held liable okay so if he is nothing is an offense if it is done by a man who is at the time of doing is incapable of knowing the by reason of unsoundness of mind the nature of act or whatever he's doing is wrong or contrary to law okay so he'll have to prove the surrounding circumstances his conduct and around the commission of offense what was whether he was capable of understanding or knowing the nature of the act or not that will have to be checked that will have to be checked okay that will have to be checked okay now unsoundness of mind need not be permanent it can be temporary also like epilepsy sleepwalking idiocy all of that can be done okay now there is a these are the judgments Ashuddin versus State of West Bengal Babu Gujarat Singh Daya Bhau Jagan Bhai Thakur Queen Empress versus Kedar Nasser Shah and Lakshmi versus State now McNaughton's rule is the most famous rule. It is held in R versus Daniel McNaughton, 1843, where he was hallucinating that all people are dangerous and
he had the apprehension of death, and then he killed. Then he was said, it was held that he was totally insanely he was delusional. So court held that yes, this is the McNaughton's rule of unsoundness, where he's not understanding the nature of the act that he was doing. Okay. Now, irresistible impulse or sudden rage, whether that is an defense in India? No. ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ରାଗରେ ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେଲି, whether that is an offense, that is a defense? No, that cannot be a defense, because ଏଠି unsoundness of mind କୁ ଆପଣ temper କିମ୍ବା excessive anger ସହିତ equate କରିପାରିବେ ନାହିଁ. Next, involuntary intoxication. ଯଦି at the time of doing the act or omission, by reason of intoxication, you are incapable of knowing the nature of the act, or that whatever you are doing is either wrong or contrary to law, and that intoxication is done without his knowledge or against his will, then in that case it is involuntary intoxication, and that can be a good defense. That can be a good defense. Whether voluntary intoxication can be a defense? No, voluntary intoxication cannot be defense as such, but you can't presume intention. If there is voluntary intoxication also, then that intention cannot be presumed. Intention has to be proved. Okay. Yes, that is 86. Now, intoxication, voluntary intoxication judgments, these are the judgments, you may refer them. Okay. Now, coming to mistake of fact. Mistake of fact, section 76, if you think that you are bound by law, then in that case, you will be also, it will not be an offense, and it will be a good defense. Because here, of course, if you ignore a law, that cannot be a no excuse, but ignorance of fact is excusable. So, if a soldier firing on a mob by the order of his officer in conformity through the command of law, because he thinks that whatever his officer says, he has to do it, so he does it. So, in that case, he is presumed to be bound by law to do it, and he will not be held liable. Now, justified by law. So, that you are walking on the road and seeing that someone is molesting someone, so you shoot him. But later on, you found that there was a shooting. There was a shooting going on, and that was a part of the act. Okay, like what happened in the Golmaal movie. If anyone remembers, they thought that someone is molesting a girl, and then they went inside the house and then found that no, it was not a molestation. Rather, it was a scene of the drama that they were enacting. So in this case, it will be held to be justified by law, and it will not be an offense. Rather, it would be a good defense. The famous cases are this. Okay, State of Odisha versus Ram Bahadur Thapa, R versus Tolson, R versus Levitt. The facts we can't discuss because of paucity of time. Now, infancy. Infancy, whether that is a good defense? Yes, section 82 says anything done by a child below the age of 7 years, it will not be an offense. And if he is above 7 and below 12, but he is of immature understanding, that is, he has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and repercussions of his conduct during that occasion, then also he will not be liable. 7 to 12, you analyze whether he is understanding or not, but yes, you don't have to look into anything under section 82 for that. So 7 years less, he is simply exempted. 7 to 12, you analyze whether he has attained sufficient maturity. One example was that a child said to his grandfather that buda tate mu katiki piece kariki mardevi. He was aged 9 years, and he said tate buda mu katiki chari khanda kariki mardevi. And later on in the night, he went and taku actually katiki chari khanda kala and then mardala. So whether will you say that he has not attained sufficient maturity? No, of course he has attained. And as jaha kahithila exactly seya kala. Okay, so in that case, it will be held that he has attained sufficient maturity, and he can be held liable. Okay, so examples eta sabu deich. And tapere asila amaro justifiable acts. Justifiable acts kono? The judge gote judicially act kala beଳକୁ କିଛି punishment ଦଉଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ liable କରିପାରିବା? No. ସେ ଆପଣ ତାକୁ death penalty ଦେଲେ murder ପାଇଁ, though it will be exempted. Section 78 ରେ କହିଲା ଯଦି judgment ର pursuant ରେ କିମ୍ବା order ର pursuant ରେ କିଛି କରୁଛି,
ताले भी कोन ताकू हमें पनिशमेंट दबा नो पनिशमेंट दबानी बिकॉज इट विल बी जस्टिफाइबल एक्ट गोटे हैंगमैन जाई कि काकू फांसी दोची सेठी कोन आपण ताकू कहबे नाही पनिशमेंट दिया बनो he is also justifiable so no punishment no offense in fact next consent consent कोन consent consent ଆସିଲା कोन section 87 रे यदि intention नाही knowledge नाही and above 18 years of age से कौन करुची से consent देइची whether express or implied to suffer harm then in that case it will come under the voluntary non-fit injury ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ତାକୁ liable କରି परिबे नाही ए ଆଉ बी एग्री कले जे बॉक्सिंग करबा एक दूसरे सहित और रेसलिंग करबा एक दूसरे सहित तापर सेठी जदी किछि इंजुरी कॉज हला ए को कि बी को समाने कोन सेठी कहि परिबे कि जे नाही मते से मारला नो यू कांट बिकॉज़ you yourself volunteer to suffer this harm and there 18 years रो अधिका आपन का एज आ सेठी आर पार्टी रो किछि इंटेंशन केबा नॉलेज नथिला सो एठी आपन कर एथरे पडिबो सेक्शन 87 रे तंदी 88 रे केतरा आसीबो 88 रे जदी इंटेंशन नथिबो कॉज डेथ करिया पई इमा नॉलेज इंटेंशन नथिबो कॉज डेथ करिया पई किंतु नॉलेज थिबो दैट यस इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट सेटा हेथिबो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन and in good faith ଆଉ ସେଠି consent ନିଆ ହେଇଥିବ express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm then in that case it will be also a good defense like in the case of ଗୋଟେ doctor जदी ଗୋଟେ eye operation कला cataract operation जानी कि भी जे हां मे बी सही eyesight तार permanently lose करि जाई पारे ताले कोन आपण कहि ताकू लायबल कर परबे नो द डॉक्टर इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 88 ओके नाउ 89 रे कोन जदि गुड फेथ रे गोटे लोकर बेनिफिट पाई हु इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज और अनसाउंड माइंड सेठी आपण जदि गार्डियन रो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट नै की सेठी आपणकर इंटेंशन नाही डेथ कॉज करिया पे किंतु नॉलेज अछि जे हे पारे ताहेले सेठी कोन ऑफेंस की नो ऑफेंस नो जदि गार्डियन डुबी नि आइची ताहेले भी नो ओके चाइल्ड रो बेनिफिट पाई तारो गोटे सर्जरी करा गला ज जानि छी भी चाइल्ड मर जाई पारे जदि भी सर्जरी कला और चाइल्ड मर गला whether he will be liable no he will not be okay 90 रे फ्री कंसेंट डिफाइन कला कोन जे केते बेले कंसेंट फ्री नुह कहला जदि आपण फियर ऑफ इंजुरी किबा मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट रे किछि कंसेंट दोचंदी ताकू कोन आपण कंसेंट कहबे कि मु कहबी जे मु तम छुआ को मार देबी तम मते एटा प्रॉपर्टीटा दे दियो whether it is consent no और मु ताकू मार देबी तो हमें आसो तमे करो तो कोन सेटा को कंसेंट नो misconception of fact किबा fear of injury देथवा consent भी consent नो consent of insane person भी consent नो intoxicated person रो consent भी consent नो and if he is unable to understand the nature and consequence ताले भी तारा consent नो consent of children भी consent नो that is under 12 years of age ताकू भी consent बोली धरा जीवो नाही ओके एटा हैला आपनकर केतेबेले फ्री कंसेंट हबो केतेबेले फ्री कंसेंट हबो नाही 91 रे कोन कहला जदि आपण कंसेंट देइचंती टू फॉर ए पर्टिकुलर हार्म ताहेले आपण सेठी पर्टिकुलर हार्म पई देइचंती जदि सेटा इंडिपेंडेंटली गोटे ऑफेंस ताहेले दैट विल नॉट बी ए डिफेंस गोटे प्रेग्नेंट वुमन कोन कहूची निजे कंसेंट देला जे मोर मिसकैरेज करा जाऊ सेठी मिसकैरेज कॉज करबा इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस सो सेठी से कंसेंट देला बोली इट विल नॉट स्टॉप बीइंग ए ऑफेंस मिसकैरेज कला कना एमआरटीपी रे लिखाई छी एति की वीक परे एमआरटीपी एक्ट लिखाई छी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लिखाई छी जे एति की वीक परे अबॉर्शन करि परिबा नाही कि मिसकैरेज करि परिबा नाही तो जदी से कंसेंट भी दोउची स्टिल देन इट वुड बी नो डिफेंस बिकॉज़ से इंडिपेंडेंटली आउट ऑफेंस पई दैट विल ब्रिंग यू अंडर द स्कैनर नाउ 92 कोची कोन जे जदी गोटे लोकर बेनिफिट पई if you are doing an act or omission in good faith but without consent of his but with the knowledge of the harm सेठी आपण तार बेनिफिट पई जदी करचंती ताले भी it is okay and you can take it as a defense but of course बेनिफिट माने नुह जे पेक्युनियरी बेनिफिट आपको आपण गोटे जेंती एग्जांपल देला जे गोटे टाइगर जण को नेकी जाउची सेठी जानि छी जदी मु एना मारिया को जीबी गन रे शूट करिया जीबी बेले बेले टाइगर को बाजी के से लोक को बाज जाय पारे तो सेटू कोन कला ना से मार देला जाय की सेटा टाइगर को बाजी की जेड रे बाजिला
ସେଠି କଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ कि जे ऑफेंस कला नो सेठी କିଛି ऑफेंस କରିनी बिकॉज से एठी गुड फेथ रे बेनिफिट थाई कि बेनिफिट पई कला सेठी नॉलेज थिला किंतु इंटेंशन नथिला ओके फेमस केसेस आर दिस नाउ 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ आपन को डॉक्टर आसी की कहि दोची जे देखो तुमको कैंसर अछि से शॉक रे जदि आपण एना मर जिवे ताले कोन ताको आपण ऑफेंस कहि पारे नो so communication made in good faith but there is a harm caused but that is for the benefit of that person then in that case it will still be not an offense boli kahila okay next duress kothare duress mane actus ne in vitro factus est nisi actus act done against a person's will cannot be said to be his act duress mane kaku compulsion pakei ki kaku jabarasti kare ki jodi karuchu ताकू आपण भावंतु जोटा लोक को रिजनेबल एप्रिहेंशन अछि ऑफ इंस्टेंट डेथ सेठी जदी से एमता सिचुएशन रे अछि सेठी जोठी ताकू किछि करिया पई बाध्य करा होची देन इन दैट केस आपण ताकू कहि परिबे नाही जदी होटल भावंतु गोट लोक गैंग ऑफ डकैत ताकू आसीले त कहले तू आसे तू आसी की ए गन नै की गोटे डोरटा खोल बाडे की न खोलिबी जदी ताले तते मार देबो सेठी एक को कोन गिल्टी कर परिया नो गिल्टी कर परिबेनी बिकॉज़ ही इज अंडर द ड्यूरेस ओके सो ऑफ कोर्स बट आपण मर्डर कर परिबेनी ड्यूरेस रे थाई की मर्डर कर परिबे नाही कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट भी कर परिबे नाही ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विथ डेथ भी कर परिबे नाही ता छडा आउ किछि भी जदी आपण ड्यूरेस रे करचंती यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल ओके नाउ 95 सेज ट्रिफल de minimis no curate lex माने कोन जे लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ द ट्रिफल्स आपण कोन कले मोर मोटे मैचेस बॉक्स थिला मैचेस बॉक्स रो दीटा मैच स्टिक नै गेले ता पई कोन मु केस करबी नो एठी केस किछि हबनी बिकॉज़ एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म बट हाउ स्लाइट इट इज अगेन इट इज सब्जेक्टिव मे बी हे पारे जणक पई गोटे कदली कांदेटे चोरी कर दवा स्लाइट हार्म भाले भाब परंती बट बहुत जणक पई दैट इज अ ह्यूज थिंग गारे मु देखिछि कदली कांदी पई केस वार मु देखिछि सो सेठी आपण जदी स्लाइट हार्म कॉज कला देन जदी ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टेम्परर पर्सन किसी कंप्लेन करिवोनी संत्या ट्रिफल्ड एक्ट रे देन दैट वुड बी a valid defense okay now coming to accident जदी गोटे लॉफुल एक्ट करूचंती while doing a lawful act किछि क्रिमिनल इंटेंशन नाही नॉलेज नाही लॉफुल मैनर रे करूचंती लॉफुल मींस रे करूचंती प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं करूचंती एंड सेठी प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं करूचंती प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं करूचंती देन इन दैट केस आपण सेठी आपण कहि परियो नाही मु गोटे बर्ड को शूट करिया चाहंतली बट बुलेट टा जाई की से कोन कला ना ट्री रे बाजिला ट्री रु जाई की रिफ्लेक्ट करी की बाजी वाला आ गोटे लोक को सेठी कोन मते लायबिलिटी देय हो नो बिकॉज़ इट इज एन एक्सीडेंट ओके से मु एक्स सहित मु वर्क करथली एक्स रो हेड टा जाई की फ्लाई करी की आ जण को मार देला सेठी से प्रॉपर कॉशन नहीं करथला सेठी कोन आपण कहि परिबे जे नो ही इज लायबल नो ही इज नॉट लायबल ओके यस एठी एया भी कहिछि जे आपनकर भाबंतु जे गोटे आपण पॉकेट रे रखिसंती गन सेठी भी जदी गोटे पिक पॉकेट वाला जे चोरी करिया चाहूची आपण को पार्टी रे आपण को हाथ रे माने पैंट पॉकेट रे हाथ पुरेला हाथ पुरे की से कंगला ना कला को ट्रिगर टा पुल हे गला आ से लोक मरि गेला सेठी कोन ताको मर्डर पे लायबल कर परिया नो बिकॉज़ ही वाजंट अवेयर ऑफ द पिस्तौल सेठी यस आपण ताको अटेम्प्ट टू थेफ्ट पे करि परंती बट he will not be liable for murder because it is an accident something necessity 81 रे कोन कहला जदी आपनकर time to think nahi and then there is a choice to save one harm and take risk of another harm or imminent danger अछि सेते बेले आपन को either choose करिवे गोटे harm choose करिवे नले another harm choose करिवे सेठी intention आपनकर नाही but knowledge अछि जे yes one harm may be caused सेठी जदी गोटे रिस्क नेले आपन causing the other harm and that you acted in good faith then that will be a defense okay because necessity knows no law good necessitas non habet legum and no person can be held guilty of a crime without his willingness or intention okay आपन रास्ता रे गाड़ी चलै जाउछंती एपट देखले गोटे बुढाटे अछि सेपट देखले 10टा स्कूल चिल्ड्रन अछंती आपन जानचंती जे मो गाड़ी ब्रेक फेल हो जाईची मु सेठी कोन करिवि
मु गाड़ी तो ब्रेक जदि ठीक अछि ताले थोड़े ही आपण का मारिए ब्रेक मारिए कारण जदि आपण कर एपटे बुढ़ा सेपटे 10टा छुआ ताले आपण कोन करिवे बुढ़ा को जदि चढ़ाई देले then in that case of course it will be coming under necessity. Okay, now Queen versus Dudley and Stephen is the most important case जो थरे से माने गोटे निजे जेतु गोटे बोट रे स्टॉक हे जाइथिबे शिप रे स्टॉक हेथिबे से माने डिसाइड करिवे तीन जण भितरु जण जो छुआटा थिबो ताकू मारी की खाया पे बिकॉज़ दे हैड नो फूड एंड दे वांटेड टू सर्वाइव सठी आपण ताकू नेसेसिटी रे पड़ी परिबो and he can escape liability or not. Yes, सेठी कहला जे किंतु liability escape करि परिबो नाही काहे कि ना सेठी आपण निजको बचे sacrifice करिया कथा भाबी थानते you cannot kill someone but yes जदी सेठी आपण greater harm avoid करिया पे करचंती ताहेले you can escape the liability एठी greater harm किछ नै कना एठी आइदर ताकू मारथांते नले आपण निजे मरथांते सेठी ओ सेठी आईपीसी कुए माने लॉ कुए जे आपण निजको पछे मारंतु बट अलगा काहू मारंतु बट ग्रेटर हार्म को सेव करिया पे आपण कर परिबे डजंट मीन दैट सेल्फिशली आपण निजको बंचिया पे आउ काहू मार देबे ओके एरा सल्ला हमरो ये तापर आसी हमरो प्राइवेट डिफेंस असला 96 कोन कहला जे जने जदी प्राइवेट डिफेंस असस डिफाइन हेनी बट से कहूची जहां भी प्राइवेट डिफेंस कराउची सेटा को सब ऑफेंस नुह प्राइवेट डिफेंस माने आपण के गोटे मारे गछ आपण प्रॉपर्टी किछि नवा गछ आपण ताको बंचिया पे जदी आपण किछि करूचंदी दैट इज कॉल्ड थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस ओके सो 97 रे कोन कहला जे प्राइवेट डिफेंस को जिंस पे एक्सटेंड करे बॉडी पे और प्रॉपर्टी पे बोथ पे एक्सटेंड करे बॉडी और प्रॉपर्टी बोथ पे एक्सटेंड करे बोली कहला कथा जस्ट अ सेकंड ओके सो प्राइवेट डिफेंस केतले एक्सटेंड करे बॉडी को प्रॉपर्टी को एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपण निजर बॉडी किबा आउ गोटे कार बॉडी किबा निजर प्रॉपर्टी किबा आउ गोटे कार प्रॉपर्टी को आपण एक्सटेंड करी पारिबो दैट प्राइवेट डिफेंस समटाइम्स इट कैन एक्सटेंड टू cause death and sometimes it will not extend to cause death okay तापर असला कोन just a second asking कोन yes okay so yes 97 रे कोन कहला the right of private defense of the body and property सेठी कोन कहला जदी आपणकर किछि भी theft robbery mischief criminal trespass attempt to commit theft robbery mischief or criminal trespass हेची सेथले भी आपण आपण कर
हेई पारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करी पारे ओके सेठी जदी भाबंतु गोटे फादर प्रोटेक्ट करिया पे निज डॉटर को फ्रॉम द अटैक ऑफ ए थीफ जद ताकू गोडरे मार देला सेठी जेतु से प्राइवेट डिफेंस रे करची से लायबल हबो नहीं बट प्राइवेट डिफेंस खाली इमिनेंट इमरजेंसी रे ही अलाउ हुए सेठी जदी आपनकर सफिशिएंट टाइम अछि टू टेक रिकोर्स ऑफ द लॉ देन इट विल नॉट कम अंडर द प्राइवेट डिफेंस ओके आपण नॉर्मली law does not expect it to be a coward but of course जदि आपनकर sufficient recourse अछि available पुलिस को डाकिले आस परिवे से मत आपन को फोन करी कहला जे र तते जाउची मारिबी तो पहुंची मारिबी मो बाहरली ना दिल्ली रु पहुंची तो पाखरे मारिबी आपन पाखरे अछि 2 दिन अछि आपन जाई पुलिस रिकोर्स नै परिवे किछि कर परिवे आपन कहले से मते आसलानी मते इमिनेंट डेंजर मते फील हेलानी जिबे आपन जाईकी सेई ताको जाईकी एयरपोर्ट रे जगिथिबे एयरपोर्ट जदल से बोलेबो ताको मार देबे no that will not be a private defense because sati imminent danger nahi okay but of course private defense रे एटा भी गोटे मन रखियो पड़िबो जे just because someone is exempted because of a general exception does not mean that आपनकर प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट नाही आपनकर प्राइवेट डिफेंस स्टिल भी अछि बोली कहला ओके अछि बोली कहला सो गोटे स्मॉल चाइल्ड भी जदी आपन पछरे गोटे धरिकी गन धरिकी दौड़ेला आपन प्राइवेट डिफेंस रे ताको मार दे परिबे ऑफ कोर्स ही विल आल्सो बी कवर्ड अंडर सेक्शन 82 बिकॉज़ सेटी ही इज अंडर 7 यस बट आपन भी प्राइवेट डिफेंस रे एक्सरसाइज करी तो मार परिबे पागलटे आपन को दौड़ौची ताले आपन ताको मार दे परिबे ओके सो सेटा 98 रे कहला जदी गोटे लोक बाय रीजन ऑफ यूथ और वांट ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग unsoundness of mind, intoxication of person doing that act, or misconception of fact जदि आपन को से मारिया को चाहूची और किछि एक्ट हिंदी करिया चाहूची ता अगेंस्ट भी आपनकर प्राइवेट डिफेंस अछि बोली कहला इवन दो ही विल नॉट बी लायबल स्टिल देन आपनकर भी प्राइवेट डिफेंस अछि ओके नाउ यस सरला 99 रे कोन कहला को एक्ट रे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नाही जोठी आपनकर रीजनेबल एप्रीहेंशन नाही of death or grievous hurt then in that case or seti public servant acting in good faith or under the color of his office or by the direction of a public servant acting in good faith under his color of his office so public servant को किछि एक्शन अगेंस्ट रे आपन पुलिस अरेस्ट करे बसछि आपन सेति प्राइवेट डिफेंस करि परिबे नाही बोली जदि से गुड फेथ रे करूछि ओके और जदि आपनकर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट होनी देन इन दैट केस आपनकर प्राइवेट डिफेंस नाही बोली कहला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तेणु सेतिपई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पके परिबो कहितला 96 रे एंड 99 रे एई सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पकेला आ कोन कहला जदी सफिशिएंट रिकोर्स थिबो पब्लिक अथॉरिटी किबा पुलिस को जिया पई ताहाले भी आपनकर नाही जे आपन प्राइवेट डिफेंस करि परिबे आ प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ इमिनेंट डेंजर और अटैक करिया कथा एक्सीड करिया कथा नो इट मस्ट बी प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनिटिव आपनकर चोरी गोटे आसला चोरी आसी आपनकर येटा को नेकी पड़ेला मन नहीं पड़ेला आपनकर पर्सा नहीं पड़ेला आपन कोन करे ना जाई की ताकू गोड़े पर्सा धरले पर्सा दे देला से छाड़े देला तापर भी आपन जाई की आपन मन शांति हलन जाई ता घरे पसी की ताकू मारले आपन कहबे एटा प्राइवेट डिफेंस नो बिकॉज़ सेठी आपनकर डेंजर और ऑलरेडी पड़ेलानी आपन प्रोपोर्शनल ताकू करिया कथा आपन जदी अधिया करचंदी देन इट विल बी नॉट कवर्ड अंडर प्राइवेट डिफेंस ओके एग्जांपल एटी तारा देला ओके सो जतले से माने विथड्रॉ कर सालानी ऑलरेडी अटैक रु सतले प्राइवेट डिफेंस न थाए तापर आसला 100 रे केते बेले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ यदि आपनकर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ अछि एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट अछि आपन को रेप करिया पे के आछि अननेचुरल लस्ट सैटिस्फाई करिया पे आछि किडनैप अबडक्शन करिया को आछि रॉन्गफुली कन्फाइन करिया को आछि एसिड अटैक करिया को आछि ए सब केस रे आपन कोन करिवे ना आपन डेथ कॉज करि पारिबे बोली कहला डेथ कॉज कर परिबे किछि असुविधा नहीं आपन डायरेक्ट करि पारिबे डेथ कॉज 101 रे कहला जते बेले कहला जदी एई सब भितरु किछि गोडा न आसी ताले आपन डेथ कॉज कर परिबेनी बट डेथ छडा अलगा किछि कर परिबे गोडो को हांड दे परिबे गोडो को मार दे परिबे बट डेथ कॉज कर परिबे हाथ भांग दे परिबे गोडो भांग दे परिबे बट डेथ कॉज कर परिबे डेथ कॉज करिया कहले 100 रे जहा देछि सत्य के भितर हवा दरकार 102 रे कोन कहला केते बेले प्राइवेट डिफेंस कमेंस करिवो केते बडन कंटिन्यू करिवो as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises
और ओन और समवन एल्स जहार भी आसीगला सेते पले सेटा कमेंट्स करे आ कंटिन्यू करे जे परंतु से डेंजरटा और एप्रिहेंशन ऑफ डेंजरटा कंटिन्यू करूची जेतले सेटा से डेंजरटा सरी गला सेतले आपनकर प्राइवेट डिफेंस रो राइट भी सरी गला ओके प्राइवेट डिफेंस रो राइट भी सरी गला प्राइवेट डिफेंस रो राइट भी सरी गला जस्ट अ सेकंड ओके सो एटा सरला आपनकर 100 टू केतेबेले कमेंट्स करे केतेबेले एंड करे नाउ फोर्स जे केतेबेले यूज कर परिबो जे परंत रीजनेबल एप्रिहेंशन हैला एप्रिहेंशन हैला सेते यूज कर परिबो आ जेतेबेले से एप्रिहेंशन सरी गला सेते पर्यंत फोर्स यूज करि परिबो वंस दैट एप्रिहेंशन एंड्स तापर फोर्स यूज करि परिबो नाही 103 रे कहला समथि केतेबेले प्रॉपर्टी रेस्पेक्ट रे प्राइवेट डिफेंस रे डेथ कॉज कर परिबे रॉबरी करूची हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करूची और मिसचिफ बाय फायर करूची और थेफ्ट मिसचिफ हाउस ट्रेसपास इनके सर्कमस्टेंस रे करूची जे आपन को एप्रिहेंशन आछी कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द consequence either to you or someone else तापरे आपन सठी डेथ कॉज करि परिबे किछि असुविधा नाही बट ता छडा आउ को केस रे आपन डेथ कॉज करि परिबे नाही 104 रे से कहि देला जे सब गुडा के छाडी कि जदी अलगा को केस होची ताले सठी अलगा हार्म किछि करि परिबे बट डेथ कॉज करि परिबे नाही बोली कहला ओके सो आपनकर 100 103 रे कहला जे केतले डेथ कॉज करि परिबे और 101 104 रे कहला डेथ छडा अलगा केतले करि परिबे ओके 100 टा कोथला आपनकर बॉडी रो 101 टा बी बॉडी रो 103 104 सेंती प्रॉपर्टी पई ना 105 जे प्रॉपर्टी पई कमेंसमेंट केतले हुए केते पर्यंत कंटिन्यू हुए जेतले रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंस करे सेते बेले जेमति थेफ्ट केस रे केते बेले पर्यंत करे जेते पर्यंत से प्रॉपर्टी टा रिकवर न होईची किबा पब्लिक अथॉरिटी रा असिस्टेंस न मिलिची किबा प्रॉपर्टी जे पर्यंत रिकवर न होईची से पर्यंत होची और जे पर्यंत से दौड़ी की जाईची आपण रिट्रीट न करचंदी सेते पर्यंत एटा एक्सटेंड करे रॉबरी रे केते पर्यंत कंटिन्यू करे रॉबरी जे पर्यंत ऑफेंडर causes or attempts to cause to any person death hurt or wrongful restraint और जे पर्यंत fear of instant death or hurt or personal restraint कंटिन्यू करे सेते बेले आपनकर कंटिन्यू करे आउ बोली कहला रॉबरी रे क्रिमिनल ट्रेसपास मिसचिफ रे जे पर्यंत ऑफेंडर सेही कमिशन करू थाए क्रिमिनल ट्रेसपास मिसचिफ सेते पर्यंत थाए हाउस ब्रेकिंग नाइट रे जे पर्यंत हाउस ट्रेसपास हो थाए हाउस ट्रेसपास हैड बिगन बाय हाउस ब्रेकिंग सेते पर्यंत आपनकर कंटिन्यू करे बोली कहला ओके नेक्स्ट आसिला आपनकर कोन एटा आपनकर देखिदेबे किछि असुविधा नै 106 कोन कहला the right of private defense against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person कोन कहूची जे जदी आपनकर ओडा असल्ट होची आ सेठी आपना एप्रिहेंशन करचंदी जे नाही डेथ हेटी हे जिवो बट सेठी आपन कोन करचंदी आपन जदी गोटे हार्म कर देले भी इनोसेंट पर्सन को सेठी आपन लायबल हेबे नाही आपन गोटे मॉब अटैक कला मार देबा पई आपन सेठी देखिले किछि मॉब रे किछि इनोसेंट लोक भी हर्ट हे परंती छुआ भी अछंती समान भी हर्ट हे परंती बट आपन कोन करले ना गुडी चलेले दे सदरी जदी छुआ के मरि गला हेट पई आपन लायबल हेबे नाही बिकॉज़ आपन जो प्राइवेट डिफेंस कले कोन पई बिकॉज़ आपन सेठी डेडली असॉल्ट रु बंचिया पई कले सेति पई कहला अमजद खान वर्सेस स्टेट इज द फेमस केस अराउंड इट से मॉब तथरे आस्तला आपन सेतरे जेतु एंटायर फैमिली वाट्स एट स्टेक सेति से पुलिस को डाकितले भी हेई नथंदा सेति पई से मारना मार देला शटर भी बंद कला तापर बॉम्ब देले बाड़ेले सेठी कोन कला ना क्राउड ऊपर एम करिकी शूट कला आ गोट लोक मरि गला सेठी आपन कहला जे हेबे okay so this is our Amjad Khan versus state next एडा सब जजमेंट गुडा देखि देबे स्टेट ऑफ यूपी रामसरू बसंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बुट्टा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब देन अराउंड स्टेट ऑफ यूपी जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ए सब आसला तापर आसीबा हमें अबेटमेंट को अबेटमेंट समथी ए फॉलोइंग हेड्स रे हमें पढिबा ओके नाउ अबेटमेंट कोन तीनटा जिंस हेले अबेटमेंट जदी इंस्टिगेशन होची
by willful misinterpretation or willful concealment. Instigation hochi by willful misinterpretation or willful concealment, then that is abatement. Jodi apan engage korchunti conspiracy re, then also that is abatement. Intentionally aid korchunti, then that is also abatement. These three things are called abatement. So yes, so it will be called abatement. Okay, so abatement ta kono, jodi doing of a thing sethi apankara either active persuasion thibo kimba active suggestion thibo kimba provocation thibo, then that will be called abatement, jota ki amra explanation re bi ame dekhiba. Okay, now je abate karuchi kono, je whoever abates of an offense or commission of an act which could be an offense if committed by a person capable of law of committing an offense, ସେଠି ବି ଆପଣ ତାକୁ ପଢିବେ ବୋଲି କହିଲା। ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇନର କୁ ଆବେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇନର ଯାଇକି ମାରିଲା, ସିଏ ଲାଇବଲ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ରେ ପଢିବେ ବୋଲି କହିଲା ଓକେ। ଆବେଟମେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ କଲେ ବି ଲାଇବଲ ହେବେ, ମାଇନର କୁ ବି ଆବେଟ କଲେ ଯଦି ସିଏ ବି ଲାଇବଲ ନ ହବ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଲାଇବଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଲା। ଓକେ, ଏଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ? ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ same punishment as that of principal perpetrator, ଆଉ ସେଠି ଯଦି abatement କରୁଛି ତାର abatement abated offense committed as consequence of abatement ରେ ବି ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ A abets B to kill C, abets B to kill C and B killed C, ସେଠି ଆପଣ 109 ରେ ପଡିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ସେ ମାରି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ 115 ରେ ଲାଇବଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଆବେଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମାରିଲାନି ତାହେଲେ 115 ରେ ପଡିବେ। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଆସେ ଗୋଟେ ରୁଲ ସେକ୍ସନ 114 ଆଉ 109 ରେ ରୁଲ ଅଫ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଲାଇବିଲିଟି ଆସୁଛି ଯେ ସେଠି ଲିଗାଲ ଫିକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ you are deemed to have committed the offense. Abetter ଯଦି ଅଛି while the offense is committed ତାହେଲେ ବି he is deemed to have committed the offense. Okay, Mathurala Adi Reddy versus State of Hyderabad is the important case. 110 ରେ କହିଲା ଯଦି individual abet କରୁଛି individual abated commits different offense than that was abated, ଆପଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ସେ କଣ ଯାଇକି ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପଡିପାରିବ ବୋଲି କହିଲା ଯେ ପଡିବ, ବଟ୍ ସେ ଯାହା ଆବେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିଥିଲା ତା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ମର୍ଡର ପାଇଁ ଆବେଟ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ସେ ଯଦି ରେପ୍ କରିବ ତା ପାଇଁ କଣ ଆପଣ ପଡିବେ? नो, ସେ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ ନଲେଜ ଥିଲା ଦେନ୍ ସେଠି ପଡିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ହଁ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଡକାୟତି କଲା ବେଳକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ସେଠି ଆପଣ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ରେ ପଡିପାରିବେ ମର୍ଡର ର। ଓକେ, ସେକ୍ସନ 111 ରେ କଣ କହିଲା ଯଦି ଆବେଟ କଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି he does that one thing along with another wrongdoing, ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାୟବଲ ହେବେ। ସେ କଣ କଲା ନା ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ଚାପଡା, ସେ କଣ କଲା ନା ବିଧା ବି ମାରିଦେଲା, ଆପଣ ଚପଡା ପାଇଁ ବି ଲାୟବଲ ହେବେ, ବିଧା ପାଇଁ ବି ଲାୟବଲ ହେବେ। ଯେମିତି ଡକାୟତି ପାଇଁ ପଠେଇଲା ସେ ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ଡକାୟତି ପାଇଁ ବି ଲାୟବଲ ହେବେ, ମର୍ଡର ପାଇଁ ଲାୟବଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ସେ ରେପ୍ କରିଦେଲା, ସେଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଇଣ୍ଟେନସନ, ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ଲାୟବିଲିଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେକ୍ସନ 112 କଣ କହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଯେତିକି ଆବେଟ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ସେ ଅଧିକା କିଛି କରିଦଉଛି, ଓକେ, ସେଠି ଆପଣ କଣ ହବ ଯଦି actual present on the spot then 114 will apply, ଆଉ ଯଦି virtually ଅଛି ତାହେଲେ 112 will apply ବୋଲି କହିଲା। ଓକେ, 113 କଣ କହିଲା effect of abatement କହିଲା ଯଦି effect is different from what is intended ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? 111 ରେ କହିଲା abated and act done are distinct, ଆଉ 113 ରେ କହିଲା act done and effect caused are different। 111 ର example କଣ? A abate କରୁଛି B କୁ ଯେ W କୁ ମାରେ and in result also done ସେ କଣ କଲା ନା ରେପ୍ ବି କରିଦେଲା, ସେଠି ଯେହେତୁ both are likely that will happen ସେଠି ଆପଣ liable କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଏ ଆବେଟ ବି କରୁଛି assault କରିବା ପାଇଁ, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପିସ୍ତଲ ରେ ମାରୁଛି, ସେଠି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ because ସେଠି it is not the natural consequence, so that is the difference। 115 ରେ କଣ କହିଲା abatement done for offense punishable with death life imprisonment, ସେଠି କଣ ହବ ଯଦି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି then ସେଠି not committed at all ବୋଲି ଧରାଯିବ, not committed at all ବୋଲି ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ 116 କଣ କହିଲା ଯେ abatement done for offense punishable with other than life imprisonment, either imprisonment, fine or both, then punishment is 1/4 of maximum imprisonment and abater abets public servant,
then punishment to be 1/5 of offense of imprisonment. That is a कहला केते दिया हो general public by 1/4 of public servant by 1/5 बोली कहला. Commission not of abated offense सेठी जदी डेथ लाइफ imprisonment punishment ପାଇଁ abate करथिला बट से कमिट कलानी ताले 7 years of fine. डेथ लाइफ ପାଇଁ abatement करथिला और से हर्ट कॉज कला ताले 14 years of fine. Any other offense or imprisonment ପାଇଁ abate करथिला ताले 1/4 of term of fine करिवे. पब्लिक सर्वेंट हले 1/5 करिवे. आ abated जदी करूची पब्लिक ऑफिसर देन हाफ ऑफ द टर्म ऑफ फाइन और बोथ भी करिवे बोली कहला. 306 आसंती abatement of suicide कथा कहूची जो थरे कि आपण जदी गोटे लोक सुसाइड करूची आ abater सेठी ताकू abate करैची देन ताकू आपण 10 years and fine रे करिवे. आ 305 रे कहला जदी सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेंट को आपण abate करछंदी ता पय भी आपण लायबल हे परिवे बोली कहला. 117 रे कहला जदी 10 टारो अधिक लोक को abate करछंदी ताले 3 years और विथ फाइन और बोथ आपण दे पारे जेतले मॉब और क्राउड को abate करूछंदी. 118 रे कहला जदी आपण किछि ऑफेंस करछंदी पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ imprisonment and offense is committed then punishment of 7 years but offense is not committed ताले punishable with 3 years and fine बोली कहला. आ जदी डिजाइन ऑफ ऑफेंस को कंसील करिया पे किछि करा होछि पब्लिक सर्वेंट जदी करूछि सेटा जार की ड्यूटी टू प्रिवेंट से जदी किछि एमते करूछि देन ऑफेंस जदी हेई गला तले हाफ पनिशमेंट मिलिबो. आ जदी ऑफेंस हेलानी तले 1/4 पनिशमेंट मिलिबो. आ ऑफेंस जदी पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ imprisonment तले 10 years मिलिबो. ओके 120 रे कहला जे ऑफेंस कमिशन करूची व्हिच इज पनिशेबल विथ अदर imprisonment then if no offense is not committed tale 1/8 मिलिबो and offense is committed then 1/4 मिलिबो. So you can have a look into all of this rules. Now chapter 5a कहला criminal conspiracy. Criminal conspiracy definition and punishment कोन देला 120 रे कहला जदी दीटारो अधिक लोक ताकर मीटिंग ऑफ माइंड्स होची and then agreeing to do or cause to be done कोन करचंदी गोटे एक्ट करचंदी which also includes the illegal omission रेस माने से कोन करचंदी गोटे ऑफेंस करचंदी किबा प्रोहिबिटेड बाय लॉ करचंदी किबा गोटे सिविल सूट जहा भी करचंदी and or an act that is not illegal by illegal means माने मु जदी एना एग्जाम दबाकू माने ओजेस एग्जाम पास करिया को चाहूची that is not illegal but cheating करी ओजेस एग्जाम पास करिया को चाहूची that is illegal. So हम दिजन जदी मिसी की ओजेस एग्जाम रे चीटिंग करिया को कहबा then that can be illegal not illegal but by illegal means. So एथि भी आपण abatement रे पढी पारिबे. ओके सरी इंडिविजुअल इंटेंशन ता कॉमन इंटेंशन केतले हे जाय जते बेले मीटिंग ऑफ माइंड्स हे जाय कंसेंसस एडेड आसी गला सेतले मीटिंग ऑफ माइंड हे जाय. ओके जस्ट अ सेकंड गाइस. Okay. So finally the current is back. So I am also back inside the house. Okay. So एठी आपनकर कोन कहला जे आपनकर 120 रे एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार नाही किंतु 34 रे एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार. ओके मीटिंग ऑफ माइंड खाली हे गले 120 रे सफिशिएंट बट 34 रे मीटिंग ऑफ माइंड खाली हेले इट्स नॉट सफिशिएंट रादर सेठी कोन मा दरकार एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हबा दरकार बोली कहला. एक्टिव पार्टिसिपेशन भी
हवा दरकार बोली कहला ओके तापर आसला कोन जे यस पढ़ो यस इंडिविजुअल इंटेंशन केतले कम्युनिकेशन हुए जेतले मीटिंग ऑफ माइंड हे जाए एटा आपण टिके देख देबे that it is important for the point of view of means only आपण खाली एतिके जानि थांतु 120 रे मीटिंग ऑफ माइंड हैला एंड सेथरे जदि से माने ओडे ऑफेंस कले देन इन ऑफेंस करिया पे कले देन दैट इज मियर एग्रीमेंट बी क्रिमिनल कन्स्पिरेसी हे जिवो आउ डूइंग एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ सेठी आपण ऑफेंस ओवरटैक किछ करिया दरकार खाली मियर एग्रीमेंट इज नॉट एनफ आउ डूइंग एक्ट व्हिच गिव्स राइज टू सिविल सूट सेठी भी मियर एग्रीमेंट आर not sufficient and overt in furtherance needs to be done okay so etik rahila apankara dekhi debe tik now it is important that conspirators mankara knowledge thiba darkar to have knowledge of the objective knowledge hobani boli कहला okay so knowledge तांगर थिबा दरकार knowledge that it will be not happen so liability fix करिया पे तांगर knowledge थिबा दरकार बोली कहला तापर आसला कोन क्रिमिनल कन्स्पिरेसी ता गोटे कंटिन्यूइंग ऑफेंस जदी डे 1 रो प्लानिंग रु लास्ट डे पर्यंत सेटा एक्सटेंड करे बोली कहला सेटी म्यूचुअल एजेंट हवा दरकार एक दूसरे रो ताले जाय कि गोटे एक्टर ऑफ कन्स्पिरेटर पई अलगा माने लायबल ही पारिबे बोली कहला ओके नाउ इन कोर्ट ऑफेंस जदी केबे पचाराला ऑफेंस कोन अछि आईपीसी रे क्रिमिनल कन्स्पिरेसी अबेटमेंट क्रिमिनल अटेम्प्ट एसो होची इन कोर्ट ऑफेंसेस आ गुटे इन कोर्ट ऑफेंस कोथरे कहि परिबो अछि आ गुटे ऑफेंस कहलो इन कोर्ट ऑफेंस कियोटा अछि ये तीनटा छडा इन कोर्ट माने इनकम्प्लीट ऑफेंस इनकम्प्लीट बट स्टिल सर क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो कंप्लीट का इनकम्प्लीट नहीं प्रिपरेशन yes preparation to do what said dacoity yes right preparation to dacoity is also an in court offense because सेठी भी कंप्लीट हेनी बट सेठी भी हमें ताकू करि पारुचे जदि केबे पचरा जियो भी which offense is punishable at all four stages of it that is dacoity okay so preparation attempt सबु स्टेज रे punishable से okay now आसिला कोन आपनकर 120 बी punishment कते अछि जदि offense punishable with death life imprisonment or rigorous or punishment for 2 years or more अछि ताले आपण आबेटर भलिया पनिश हेबे आ जदि 2 years or two years or less than 2 years पर्यंत अछि ताले आपण सेठी 6 months or fine पाई punishable हेबे बट सेठी sanction नवा पड़िबो डीएम रो किमा स्टेट गवर्नमेंट रो अंडर 1962 जोडा में सीआरपीसी रिपोर्ट थिले 2 years रु कम रो कन्स्पिरेसी ले sanction नवा पड़े जजमेंट्स गुडा एडा सब देखि देबे कोडा का important judgment अछि criminal conspiracy रो okay yes then asba offenses against state कोन कहला waging war against government of India 121 रे दला तापरे attempt abatement दीटा को इंक्लूड करे जंती कि पार्लियामेंट अटैक केस 121 रे हला criminal conspiracy to wage war 122 रे कहला preparation by collecting arms for waging war 123 रे कहला concealing design of waging war हला तापरे 121 कोन कहला जदि गवर्नमेंट अगेंस्ट वेज वार करचंती अटेम्प्ट करचंती कि अबेट करचंती ताले डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फाइन दे हबो एथरे डेथ पनिशमेंट दे हबो ओके तापर आसला कोन 121 रे जदि कन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस करचंती एटा ताले सेठी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 इयर्स दे हबो ता सहित फाइन भी आपण देई पारिबे बोली कहला ओके तापर आसला 123 रे जदि आर्म कलेक्ट करचंती विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर सेठी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 इयर्स ता सहित फाइन भी देई हबो बोली कहला 123 रे कोचला कोन जदि कंसील करचंती विद इंटेंशन टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर ताले सेठी 10 इयर्स और फाइन भी दे हबो और बोथ भी दे हबो 124 रे कहला असॉल्टिंग हाई डिग्निटरीज प्रेसिडेंट गवर्नर सेठी आपण 7 इयर्स फाइन दे परिवे तासतो अटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट भी पनिशेबल बोली कहला जदि प्रेसिडेंट गवर्नर हाई डिग्निटरीज को असॉल्ट करिया को ट्राई करचंती ओके 124 रे सेडिशन कहला दिस इज इंपोर्टेंट काहे कि जदि आपण बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन कोन करचंती ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग कोन hatred
contempt or disaffection towards the government, punishable with life imprisonment or 3 years and fine boli achi. Government against hatred, contempt kiba disaffection until, excuse me. So that you are doing by words, by signs or actions, or by visible representations, then apanku padibe sedition re. Of course this is a very draconian law according to me, because this was made by Britishers. ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଡିସନ ର ରିଲେଭାନ୍ସ ଥିଲା, ଏବେ ରାଟଲି ସେଟା ଏମିତିଆ ଇଏ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। 125 waging war against friendly the government of India, friendly state ଅଛି ଯାହା ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଅଲଗା ରଷିଆ, ୟୁଏସ୍, ଭଲ ଭଲ ଯାହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ ଅଛି ତା ସହିତ ଯଦି ୱେଜ୍ ୱାର କଲା ତା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ 7 years ଅଫ ଫାଇନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ 126 committing depredation on territories of power at peace with the government of India, सेठी आपण जदी कोन करचंदी जे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करचंदी किमा डैमेज करचंदी ताले सेठी आपनकर 7 years फाइन और फोरफिचर हेई पारिबो बोली कहला। रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर ऑफ डेप्रेडेशन मेंशनड इन जदी कि तादरे भी आपनकर पनिशमेंट दियाइची 7 years फाइन पर्यंत दियाइची। 410 414 सहित लिंक अछि। एस्केप 125 रे कहला पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर टू एस्केप who is in custody of in a custody of prisoner ताको अलाउ करछि एस्केप करिया पई ताले आपण लाइफ इम्प्रिजनमेंट किबा 10 years दे परिबे किबा तासे तो फाइन भी देई हबो। पब्लिक सर्वेंट जदी नेग्लिजेंटली एस्केप करिया को अलाउ कर देला माने सेठी अलाउ करनी बट नेग्लिजेंटली ता पई हे गेला ताले सेठी 3 years सिंपल इम्प्रिजनमेंट आ तासे तो फाइन भी देई हबो। आ जदी एड करछि एस्केप किबा रेस्क्यू और हार्बर करिया पई प्रिजनर को ताहेले सेठी लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 years और फाइन भी देई हबो। तापर आसीबा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जोतरे की चारिटा मेन टाइप रो एफ्रे अनलॉफुल असेंबली राइटिंग और एनिमिटी अमंग्स डिफरेंट क्लासेस। अनलॉफुल असेंबली कोन कहला 5 or more पर्सन जदी तांकर कॉमन इंटेंशन अछि टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और टू कमिट एन अनलॉफुल ऑफेंस ताले सेठी आपण कोन करिवे ताकू अनलॉफुल असेंबली धरि पारिवे। ओके केतेबेले जतेले तांकर ऑब्जेक्ट या सब थिबो टू यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट स्टेट और गवर्नमेंट, रेजिस्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग, commit any mischief or trespass, to use criminal force against proper person to deprive him of enjoyment of right, to use criminal force against a person and compelling him to do something which he is legally not bound to do। एठी आपनकर हबो तांकर किंतु कॉमन ऑब्जेक्ट थिबा दरकार, दैट इज प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नथले चलिबो, किंतु जदी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी तांकर डेवलप होची दैट इज आल्सो ओके। ओके बट कॉमन इंटेंशन भी स्पर ऑफ द मोमेंट रे ही पारे, किछ असुविधा नहीं। कॉमन इंटेंशन भी आपनकर ईओ इंस्टेंटली डेवलप हे जाई पारे। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन रो डिफरेंस एठी दिए देखि दियंतु। कॉमन ऑब्जेक्ट रे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज मोर जनरल एंड कैजुअल, एठी प्रायर मीटिंग टा मोर स्पेसिफिक। एक्टिव पार्टिसिपेशन एठी नॉट एसेंशियल कॉमन ऑब्जेक्ट रे, बट इंटेंशन रे एसेंशियल। ओके एठी मोर लूज एग्रीमेंट हेले चलिबो, बट एठी मोर स्पेसिफिक एग्रीमेंट। एठी 5 or more पर्सन, एठी 2 or more पर्सन। एठी collective action is not important, एठी collective action is important। okay now coming to 142 member of unlawful assembly जदी नॉलेज अछि एंड तापरे आपण जदी ऑफेंस करचंती ताले डायरेक्टली लायबल हेबे, बिकॉज़ यू आर ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। आउ जडे करिछि आपण ता पे भी लायबल हे परिबे जदी नॉलेज अछि। मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली 142 रे कोन कहला जदी इंटेंशनली जॉइन करछि और कंटिन्यूज टू बी ए मेंबर, आउ सम मेंबर किछि कॉलेनी बट समने भी कंस्ट्रक्टिवली लायबल हे परिबे जदी भी समने ऑफेंस न करचंती। mere fact that they were a member of unlawful assembly at that time, that is also enough to make them liable for the offense। 143 कहला member of unlawful assembly हवा पई केते पनिशमेंट 6 months imprisonment or fine or both दिया जाय। 149 रे कहला every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object, जो already हम डिस्कस कर सलेनी। every member at the time of offense जे कि unlawful assembly रा मेंबर थिला आ सेठी जदी गोटे मेंबर ऑफ असेंबली गोटे किछि ताको कॉमन ऑब्जेक्ट रो प्रोसिक्यूशन रे किछि करूची ऑफेंस, देन ऑल आर लायबल बोली कहला। ओके 6-7 जन लोक बैंक रॉबरी पई गले, जेंति आपनकर भाबंतु प्रोफेसर जो केस रे आपनकर कोन मनी हाइस्ट केस रे जेतिनियंतु जणे गला आ जणे किंतु प्रोफेसर जो भितरु भी जाइनी, प्रोफेसर बाहर रहि गला, सेठी आपन ताको लायबल करी पारिबे। नाउ रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल कोन जे अनलॉफुल असेंबली थिबो, अक्यूज्ड मेंबर थिबो अनलॉफुल असेंबली रो जे ऑफेंस कला आउ सेटा ऑफेंस जोटा करिथिबो दैट इज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, आउ अदर अक्यूज्ड जहा को हमें पक्के लायबल करिया चाहू जे
सी भी से मेंबर थिबो जतले कमिशन ऑफ ऑफेंस हला जदि से अनलॉफुल असेंबली रो मेंबर को मेंबरशिप को छाड़ी सरथिबो ताले ताको आपण लायबल करि परिबे नाही ओके सरला आपनकर यस रिटायर्ड हर्ट जदि हेतिबो ताले लायबल होबो नाही माने जदि अनलॉफुल असेंबली छाड़ी दिथिबो ताले आपण लायबल होबो नाही जदि हिडन वेपन थिबो तार नॉलेज थिबो कि जे वेपन टा हिड हेची ताले लायबल हेबे ता सहित बट जदि जानि नाहंती जे किछि गोटे धरि के आसीची वेपन और तार यूज हो बोली ताले आपण तार लायबल हेबे नाही बोली कहला 144 जदि अनलॉफुल असेंबली जॉइन करचंती आर्म्ड विथ डेडली वेपन जार पोटेंशियल अछि टू कॉज डेथ ताले आपण 2 इयर्स ऑफ फाइन हेबे पनिशमेंट दे हबो बोली कहला ओके से निजे कैरी न कले भी हे पारे 145 रे कहला जॉइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स जदि कमांड कराई थी डिस्पर्स करया पई पब्लिक सर्वेंट कमांड करिछि तापर भी जदि आपण जॉइन करचंती हमें सीआरपीसी रे पढिछे जोटी की कमांड कर पारे पब्लिक सर्वेंट डिस्पर्स करया पई को सेक्शन रे के कह परियो 120 केते 129 यस 129 सर यस 129 रे डिस्पर्स करया पई कहि परियो जदि न होबो ताले आर्मी ऑफिसर भी कर परियो 130 रे डिस्पर्स करया पई कहि परियो सेठी आपण सिविल फोर्स यूज करबे 129 आगो डिस्कमेंट करिवे तापर सिविल फोर्स यूज करिवे तापर आर्म फोर्स भी यूज करि परिवे बोली 129 120 130 131 एसब रे देछि जदि तापर भी आपण करूचंती ताहले आपण एठी पनिशेबल हेबे सेक्शन 145 रे कहला राइटिंग इज इंपोर्टेंट राइटिंग कोन कहला पांचटा लोक जदि सेठी गोटे फोर्स और वायलेंस यूज करचंती आ ता पई सेठी आपनकर राइटिंग रे आपण पढि परिबे जदि 5 और मोर पर्सन्स जदि फोर्स और वायलेंस यूज करचंती बाय अनलॉफुल असेंबली देन दैट कैन बी राइटिंग पनिशमेंट ऑफ राइटिंग केते 2 इयर्स फाइन और बोथ सेंती राइटिंग जदि आर्म विथ डेडली वेपन ताले सेटा 2 इयर्स रो बडी की 3 इयर्स हो जिवो ओके राइट अनलॉफुल असेंबली रे डिफरेंस होची राइटिंग रे अनलॉफुल असेंबली सहित वायलेंस भी हुए अनलॉफुल असेंबली रे वायलेंस नॉट नेसेसरली बट एथरे वायलेंस भी हुए बोली खोज ओके इन एडिशन ऑफ वायलेंस आपण ताको राइट कहि परिबे एफ्रे कोन 2 और मोर पर्सन्स फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस ओके प्राइवेट प्लेस रे फाइट करबा एफ्रे हबनी मो घरे 2 जण झगड़ा लागुची कोन एफ्रे हबनो बट 2 और मोर पर्सन्स फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस एंड इफ दे आर डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस देन दैट वुड बी एफ्रे नाउ punishment kono 1 month imprisonment of or fine of 100 or both promoting enmity between classes 153 or 153 dela jodi apno different groups re grounds of religions race place of birth residence language etc re apno karuchandi promoting enmity then in that case 3 years or both dei habo किन जदी religious institute भितर करा होची तले 5 years भी देई हबो बोली कहला ओके 153 रे रो इंग्रेडिएंट होची जे प्रमोशन ऑफ एनमिटी हो दरकार पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करिया पई और डिस्कॉर्ड एनकरेज करिया पई करिया दरकार और सेठी फियर और अलार्म और थ्रेट और इनसिक्योरिटी अमंग दिस ग्रुप्स क्रिएट करिया पई दरकार ताले हबो ओके मेंसरिया सेठी थिबा दरकार नले हबो नाही बोली बिलाल अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रे कहितला आ प्रेजेंस ऑफ टू कम्युनिटीज इंपोर्टेंट खाली गोटे कम्युनिटी भितर जदी करूचंदी ताले सेठी हबो नाही बोली ओके तापर आसिला एटा आपण 153 बी रे बी ऐड हेची 1972 रे जो थरे आपनकर कास्ट को नै की जोटा सब सोशल डिसहार्मनी होतला ता पई 153 बी ऐड हेची जो थरे कि नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री वाज बीइंग अफेक्टेड सेठी जदी पब्लिश करचंदी सर्टेन इम्पुटेशन दैट सर्टेन पर्सन हु बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर क्लास रिलीजन और कास्ट कैन नॉट बियर अलायंस टू द नेशनल इंटीग्रिटी or a certain group of people belonging to particular caste or community are bereft of their right to citizenship, then any of the aforementioned act must perpetuate discord and harmony amongst different classes of people. Okay, तापर असला आर्मी और नेवी अगेंस्ट रे कोन जे फर्स्ट कहला जे म्यूटिनी असॉल्ट डेजर्शन इनसबऑर्डिनेशन एथिक सब अछि म्यूटिनी कोडा 131 रे कहला अबेट अटेम्प्ट करिवा अबेट अटेम्प्ट करिवा जदी गोटे किए सेलर सोल्जर और एयरमैन ता ड्यूटी छाड़ दा पई ताले कर परिबो 131 रे 132 रे जदी म्यूटिनी कमिट करिया पई कहउचंदी सेथरे भी आपण पढी पारिबे असॉल्ट सिंती कोन कहला 133 रे जदी आपण असॉल्ट अबेट करचंती गोटे ऑफिसर सेलर सोल्जर और एयरमैन रे ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर ताले आपण 133 रे 144 रे जदी अबेट करचंती असॉल्ट ऑन ऑफिसर सेलर सोल्जर एयरमैन आउ सेठी जदी असॉल्ट कॉज हे जाउची ताले आपण 134 रे पढी पारिबे डिसर्शन सेंती पडला कोन आर्मी को छाडीबा
जदि अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन करिया पे कहउचंदी ताले 135 रे आ जदि हार्बर करचंदी गोटे डेजर्टर को ताले आपण 136 रे भी पड़ी पारिबे 137 रे कहला जे मास्टर और पर्सन इन चार्ज ऑन बोर्ड जदि से काहा को गोटे डेजर्टर को ऑन बोर्ड नउची ताले सेठी भी लायबल हे परियो बोली कहला जदि से ignorant भी अच्छी then also still he can be liable बोली कहला insubordination जदि abet करचंदी कोन with the knowledge that it should be an act of insubordination आ तापर भी ता क्वेश्चन तू मान ना तोर सीनियर ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर कथा मान ना जाबो मु बुझिबी ताले भी आपण ताकू पनिशमेंट देई पारिबे बोली कहला किछि असुविधा नै आपण तपे पनिशमेंट देई पारिबे ओके नेक्स्ट आसिला 139 general applicability कोन any member of army does an offense जदि से चैप्टर this chapter will not be applicable because army navy act will be applicable एठी आपण को नॉर्मली सीआरपीसी रे कहिछि जे आपण ताकू देई देबे का को कमांडिंग ऑफिसर को पठे देबे कमांडिंग ऑफिसर ताकू ट्रायल करिवो तांकर कोर्ट मार्शल से करिवो तो सेत पई जदि सेठी थाई कि सेठी से किछि ऑफेंस करूछि देन आपण ताकू आपण आर्मी एक्ट अनुसार कि नेवी एक्ट अनुसार ट्रायल कराबो एठी अनुसार ट्रायल करा हबो नाही 140 कोन कहला जदि 140 रे भी आपण कहला जदि आपण सोल्जर सेलर एयरमैन नुहंती किंतु आपण गोटे पिंदी बुलचंदी कोन ड्रेस पिंदी बुलचंदी और गोटे टोकन बैच धरि बुलचंदी ताले आ बिलीव करिया पे कि आपण सोल्जर सेलर एयरमैन ताले आपण यदि रिसीविंग करिवार इंटेंशन अछि ताले 140 रे सेटा देला ताले पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट रे कोन कोन आसिला 161 टू 165 तो डिलीट हे जाइछि काहेकि ना पीसीए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ताकू सब्स्टिट्यूट कर दिछि 166 कहला जदि इंटेंशन अछि of causing injury or misuse of power or disobeying law ताले आपण 166 रे 166 रे कहला disobeying direction of law for the purpose of investigation हेरासला 166 ए रे ओके जदि एफआईआर रजिस्टर न करिवो ताले आपण ए 166 ए रे पके करियो बुझ परछोदी बोले पुलिस एफआईआर रजिस्टर न करे ताले आपण 166 ए रे पके पारिबे ओके 166 बी रे जदि ट्रीटमेंट को विक्टिम रो ट्रीटमेंट न करा होची ताले इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल को भी आपण लायबल करि परिबे 357 सीआरपीसी रे भी एटा पड़ी 357 रे जो अमेंडमेंट रे पस्तला 167 जदि इनकरेक्ट रिकॉर्ड करचंदी डॉक्यूमेंट वा इलेक्ट्रॉनिक ताले भी आपण पढ़ि परिबे 167 रे विथ इफ इट इज डन विथ द इंटेंशन टू कॉज इंजरी 168 कहला अनलॉफुल ट्रेडिंग लीगली बाउंड एज पब्लिक सर्वेंट जे कि नॉट टू एंगेज इन ट्रेड जदि से अनलॉफुल ट्रेड करछि ताले आपण ताकू 168 रे पढि परिबे आरबीआई रो के लोक ताकू कोइ जे ट्रेडिंग कर परिबे कारण ताक पारे इनसाइडर इंफॉर्मेशन थाए यदि आरबीआई रो लोक की गोटे ट्रेडिंग कला ताले से माने कर परिबे नै आपण जुडिशियल ऑफिसर हिसाब रे ए जो स्टॉक मार्केट रे ट्रेड कर परिबे कि यस यू कैन जदि आपण के भाबुतबे यस यू कैन तेना आपण से सब रे डील करू नांदी सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज सच आपण स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड जोते भी आपण कर परिबे जदि जुडिशियल ऑफिसर केबे हेबे 169 अनलॉफुल बिड करिया गोटे जोथरे कि आपण लीगली बाउंड नॉट टू पार्टिसिपेट बट सेठरे आपण जदी बिड करचंदी ताले आपण 169 रे लायबल हे परिबे 170 रे कहला जदी आपण इंपर्सोनेट करचंदी प्रिटेंडिंग टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस knowing that he does not hold such office then you can be held liable like अब तू मु एबे जुडिशियल सर्विस छाड़ देछि तापरे भी मु कहि बोलिबी जे आई एम ए मैजिस्ट्रेट then in that case I can be liable under 170 171 carrying token or wearing garb of public servant सेठी जदी मु बोलिबी मो आई कार्ड देखे बोलिबी मो पारे पूर्व आई कार्ड भी अछि ताक जो देखे बोलिबी ताले सेतरे भी 171 रे मु लायबल हेई पारिबी तापर आसला कोन चैप्टर 9 ए ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट दला एथरे कोन कहला जदि कैंडिडेट जे कि नॉमिनेट हेची ताकू कह जेबो कैंडिडेट आ इलेक्टोरल राइट कोन राइट टू स्टैंड और नॉट स्टैंड इन इलेक्शन और राइट टू वोट दीटा को कहला 171 बी कहला जदि ब्राइबरी दोचंदी इलीगल ग्रेटिफिकेशन दोचंदी गिफ्ट टेक और अटेम्प्ट दीटा करे आपण 171 बी रे पढि परिबे इलेक्शन पर्पस पय जदि हो 171 सी रे कहला जदि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करचंदी इलेक्शन रे ता माने इंटरफेयर करचंदी अटेम्प्ट करचंदी
ताहले आपण कोन कर परिए टू इफेक्ट द फ्री विल जदी अफेक्ट करिया पे करचंदी आपण से जो ईवीएम रे टैंपरिंग करचंदी पसी होचंदी नॉर्मली वोटिंग 10टा वोट कर दोचंदी ए सब रे 171 पर्सनेशन एट इलेक्शन जदी आउ कार वोट ना रे आपण वोट करचंदी ताहले आपण 171 डी रे पड़िबे बट ऑथराइज्ड टू वोट जदी अछि प्रॉक्सी हिसाब रे ताहले आपण करि परिबे जदी आर्मी लोकन को आंको लोकन को प्रॉक्सी वोटर दिया जाए आपण आउ का बिहा रे वोट करि परिबे बट जदी इंपर्सनेट करि करचंदी जदी बुढ़ी फुड़ी मर जाइथिबे बुढ़ा बुढ़ी मर जाइथिबे तांकर ये रे एमन आसी लोक गछंदी आसी वोट कर देबे सेंती केस रे हबो नाही ए पई एबे से जो इंक यूज करा होची जोतरे कि आपण जानि परचंदी कना हेडा लिबिवनी ए परंत सरी गलानी कि एबे भी मोर लिबिनी तणो एते दिन पर्यंत रहउची जो वन वोट देथिबे जानथिबे 171 ई ब्राइबरी पे पनिशमेंट होची 1 ईयर 171 एफ होची अनड्यू इन्फ्लुएंस पे पनिशमेंट 1 ईयर 171 जी रे फॉल्स स्टेटहुड इन कनेक्शन ऑफ इलेक्शंस यदि आपण पब्लिश करचंती कोन पर्सनल कैरेक्टर किबा कंडक्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऊपर ताले भी तादरे फाइन रो प्रावधान अछि 171 एच रे जदि इलीगल पेमेंट कराउची फॉर प्रमोटिंग और प्रोक्योरिंग द इलेक्शंस सेथरे भी आपण पनिशमेंट अछि 171 आई रे जदि फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स जदि आपण इलेक्शन अकाउंट ठीक रे रख परनंती ताले भी आपनकर पनिशमेंट अछि तापर असला कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोन कहला जदि आपण को समन कराइची टू समन कराइची आ आपण एब्सकॉन्ड करचंदी अवॉइड करचंदी सर्विस ताले 172 प्रिवेंट सर्विस करचंदी 173 नॉन अटेंडेंस जदि आपण को कुहाइची आ पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर रे आपण आसुनांती ताले 174 प्रोक्लेमेशन लापर न आसिले 174 ए ओमिशन कले नॉन प्रोडक्शन नॉन इन्फॉर्मेशन और टू असिस्ट पाई 175 176 और 187 रे अछि फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई 177 एनी सब्जेक्ट 182 कॉज इंजरी टू अदर 181 होची फॉल्स ओथ ओके रिफ्यूजल संति अछि और रिफ्यूजल करचंदी यदि ओथ पाई तले 178 आंसर पाई 179 साइन पाई 180 रेजिस्ट ऑब्स्ट्रक्ट कला जदि टेकिंग प्रॉपर्टी 183 184 होची सेल ऑफ प्रॉपर्टी 186 होची पब्लिक फंक्शन रेज विथ 188 दैट इज डिसोल्विंग थ्रेट होची 189 रे पडिबो पब्लिक सर्वेंट रे आ इलीगल परचेस बिडिंग रे 190 बोल पडला 185 रे पडला ओके सो जदि डिस्कस करिया गोटे जदि आपन को समन इशू होईची एंड आपण एब्सकॉन्ड करचंदी टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन नोटिस और ऑर्डर ताहले जदि आपण पब्लिक सर्वेंट किबा कोर्ट टू अवॉइड करचंदी ताले 172 रे पडिबे आ जदि प्रिवेंट करचंदी सर्विस न होई पारु किबा पब्लिकेशन न होई पारु देन भी आपण एथरे लायबल हे परिबे 173 रे आ एब्सेंट जदि किबा नॉन अटेंडेंस जदि अछि ताले 174 रे कहला जदि आपण को समन दिया आइछि आ तापर भी आपण आसुनांती लीगली बाउंड टू अटेंड बट आसुनांती इंटेंशनली ओमिट करचंदी आसुनांती ताले 174 रे पडिबे 161 रे भी कहछि जदि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को लाडू आपण डाकुछि आपण न आसुचंती ताले भी आपण लायबल हे परिबे 174 ए रे कहला जदि आपण को प्रोक्लेमेशन इशू हेछि बट से प्रोक्लेमेशन हिसाब रे आपण जदि से टाइम प्लेस न पहुंचले ताले भी लायबल हे परिबे ओमिशन कोन कहला जदि आपण गोटे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिया कुहाइछि किबा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करिया कुहाइछि किंतु आपण प्रोड्यूस करनांती जदि पब्लिक सर्वेंट किबा कोर्ट रो ऑर्डर थिबो ताले भी आपण लायबल हे परिबे आ 176 रे कहला जदि इंटेंशनली ओमिट करचंती गोटे इंफॉर्मेशन दवा पई टू एनी पब्लिक सर्वेंट ताले भी लायबल हे परिबे 187 रे कहला जदि असिस्ट करूनांती पब्लिक सर्वेंट को बट यू आर बाउंड बाय लॉ ताहले आपण भी ओमिट करिया पई भी आपण को लायबल हे परिबो 187 रे फॉल्स इंफॉर्मेशन पाई एटा असला फॉल्स स्टेटमेंट जदि ओथ से दोचंती knowing that or believing that it is false to public servant or person authorized by law 181 रे false information to injure other or सेटा जदि आपण पब्लिक सर्वेंट को दोचंती knowing or believing it to be false ताले 182 रे पडिबे और false information furnish करचंती knowing or having the reason to believe that it is false ताले आपण 177 रे पडिबे तंदी oath or affirmation जदि आपण को required by law to give it but आपण दो नाहंती ताले 178 रे आपण किछि क्वेश्चन पचरा होछि जदि आपण दबा पे बाउंड किंतु आपण दो नाहंती ताले आपण पडिबे 179 रे 161 2 सीआरपीसी रे सहित आपण एटा को पढियो पडिबो जोथि पुलिस ऑफिसर आपण पचारु जदि आपण न दोचंती ताले भी 161 2 रे आई परिबे 180 रे आपण को साइन करिवा पई लायबल किंतु आपण जदि साइन करू नाहंती ताले आपण भी 180 रे पढि परिबे जंती 164 स्टेटमेंट परे आपण को साइन करिया दरकार 164 स्टेटमेंट रे आपण साइन करू नाहंती आपण पचलो कहले मु साइन करिबिनी सेटा रे आपण 180 रे पढि परिबे रेजिस्ट ऑब्स्ट्रक्ट पई संति कहला जे जदि यू आर टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ताले 183 रे ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एनी पब्लिक सर्वेंट पडला 184 रे आ वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक फंक्शंस एटा पडला 186 रे
185 सेमती इलीगली परचेज करिया प्रॉपर्टी और बिड करिया प्रॉपर्टी ए सब रे पड़ला 185 188 रे कहला जदी ऑर्डर promulgated by the public servant जदी ताकू डिसोबे करचुंदी ताले पड़ला 188 रे 189 रे जदी थ्रेट दोजनी पब्लिक सर्वेंट जोटा की कहउचंदी फॉर इंड्यूसिंग पब्लिक सर्वेंट टू डू एनी एक्ट और फोरबियर टू डू एनी एक्ट और डिले टू डू एनी एक्ट ताले पड़िबो 189 रे किन जदी थ्रेट दोचंदी एनी पर्सन inducing to refrain or desist or making an application for protection against injury to public servant सेठी आपण 190 रे पड़ी पारिबे तापर असला false evidence prevent seizure of property पई 206 रे देची आउ fraudulent claim पई 207 रे देची fraudulent decree पई 208 favor पई 210 false claim पई 209 आउ charge पई 211 the false and fabricated evidence 191 196 false certificate 197 use of false certificate 198 false declaration 199 to 200 so the disappear evidence or false evidence to screen offender 201 no information were bound to give information 202 false information 203 and destroying document with having the mens rea to prevent production in evidence 204 personation asila false in suit te asila 205 jury assessor asila 229 okay now देखिबा कोन आउ समति असला पब्लिक सर्वेंट जदी रॉन्ग डोर अछि देन ए सब जाको गोटे गोटे आसीबो ओके एडा भी टिके देखि देबे हार्बर फेलियर गिफ्ट स्क्रीनर ए सब रे अछि ओके नाउ टिके टिके सब देखि देबा 191 रे गिविंग फॉल्स एविडेंस 182 रे फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अछि 183 रे पनिशमेंट दिया अछि 194 रे पनिशमेंट फॉर 192 प्रोक्योर पनिशमेंट फॉर कैपिटल पनिशमेंट दिया अछि कैपिटल पनिशमेंट दबा पई काहू जदी फॉल्स एविडेंस दोचंती ताले से जदी डेथ पाई गला ताले 184 रहबो आ जदी लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट पाया पई प्रोक्योर करिया पई आपण फॉल्स एविडेंस दोचंती ताले आपण 195 रे आउ जदी आपण थ्रेट दोचंती टू गिव फॉल्स एविडेंस ताले 195 ए रे आउ एविडेंस यूज करचंती नोइंग इट टू बी फॉल्स ताले 196 रे फॉल्स एविडेंस केतेला दबा जदी आपण जानि चंती यू आर लीगली बाउंड बाय ओथ और बाय लॉ आउ सेटी स्टेटमेंट दोचंती जोटा की नोइंग और रीजन टू बिलीव दैट इट इज false then in that case it will be giving false evidence fabricating false evidence jodi fabricate korchunti ki manufacture kinti evidence making or false documents for judicial proceeding or other proceeding tale apankara padibe 192 fabricating taपर asla kono punishment ket kono diya hichi 193 रे दिया हिची judicial proceeding रे करिया पे 193 रे other proceeding भी दिया हिची convict for capital punishment 194 रे life imprisonment रे 195 रे threatening पई 195 ए रे और using or knowing it to be false रे 196 रे पड़िबे false certificate कोन कहला issuing or signing false certificate knowing or believing that the certificate is false in material point of view 197 using as true certificate known to be false or corruptly uses or attempts to use जदी करचंदी ताले 198 रे जदी false declaration कले जदी आपण bound अछंती to receive as evidence ताले आपण और authorized by law to receive as evidence जदी सथि आपण false declaration करचंदी ताले आपण 199 रे पड़िबे and using as true such declaration knowing it to be false or corruptly using or attempting to use it ताले भी आपण false evidence जेम दोचोदी सेमति पड़िबे 200 हिसाब रे harbor करिवा माने काकू conceal करिवा knowing or reason to believe that he is the offender with the intention of screening him from legal punishment कोन आपण intention जदा से बंची जाओ ताले आपण को harboring रे पड़िबे आउ 216 रे कहला हार्बरिंग ऑफेंडर who is in custody and he has escaped from custody सेठी 216 रे पड़िबे आउ पेनल्टी केते हार्बरिंग रॉबर्स और डकैट्स पई 7 years and fines बोली कहला स्क्रीन करबा ऑफेंडर को स्क्रीन करिया पे जदी गिफ्ट दिया होची ताले कोन हबो टेकिंग गिफ्ट टू स्क्रीन ऑफेंडर इन कंसीडरेशन ऑफ काउंसलिंग एन ऑफेंस ताले सेठी आपण भी पढि परिबे 213 रे आउ 214 रे जे ऑफर करूची ताकू भी आपण पके परिबे लायबल जदी गिफ्ट दोउची जे आकू बंचे की रख ताले भी आपण पढि परिबे बोली कहला प्रोसीडिंग रिलेटेड टू तापरे असला कोन 217 रे जदी डिसोबिंग इन डायरेक्शन ऑफ लॉ करचंती विद इंटेंशन टू सेव 217 रे एंड इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग करचंती टू इंटेंशन टू सेव एनी पर्सन ताले भी जदी पब्लिक सर्वेंट टा करची ताले 218 रे रॉन्ग एफआईआर कर दोची और एंती नीति करची ताले आपण 218 रे पढिबे 217 रे 219 रे कहला जदी पब्लिक सर्वेंट है कि करप्टली और मैलिशियसली गोटे जुडिशियल प्रोसीडिंग रे एनी रिपोर्ट ऑर्डर वर्डिक्ट और डिसीजन करचंती ताले 219 रे पब्लिक सर्वेंट जदी करप्टली कमिट्स फॉर ट्रायल ताले 220 रे पडिबो तापर आसला कोन जदी अथॉरिटी आपनकर अछि
एंड करप्टली एंड मैलिशियसली आपण ताकू ट्रायल और कन्फाइनमेंट को पठौचंती और ताकू कन्फाइनमेंट रे रखुचंती ताल आपण 220 रे पढिबे जदी से गिल्टी नुह आपण तो जबरदस्ती रखुचंती सेमती पब्लिक सर्वेंट जदी इंटेंशनली ओमिट करची काकू अप्रिहेंड करिया पई किंबा ताकू इंटेंशनली सफर्स कि से एस्केप करि जाऊ किंबा इंटेंशनली एड करची से एस्केप करि जाऊ ताले 221 रे पढि परिबे ओके 221 जदी सेंटेंस ऑफ कोर्ट द्वारा हितो ताले 222 रे पढिबे सेमती 223 रे जदी पब्लिक सर्वेंट जाकू कन्फाइनमेंट रे रखिया कथा नेग्लिजेंटली जदी ताकू एस्केप करि दोची ताले 223 रे पढिबे 225 एटा रेसिडुअल omission to apprehend or sufferance of escape on part of public servant in cases not otherwise provided for सेठी आपण 225 ए रे पढिबे आउ जदी निजर apprehension को रजिस्ट करछि किए और illegally obstruct करछि ताले he will be liable under 224 किंतु जदी आउ कहार apprehension को रजिस्ट करा जाउछि जेंति मुन्ना भाई रा सर्किट करिवो ताले सेठी पढिबो 225 रे तापरे 225 बी रे रेसिडुअल को थोड़ा कहि देला 227 कोन कहला जे कंडीशनल रेमिशन ऑफ पनिशमेंट जदी knowingly violates any condition on which such remission was granted ताले आपण पनिशमेंट दियाबो जतिकी ओरिजिनल ताकू सेंटेंस कराइतला एंड जदी बिल्कुल सेंटेंस करिनी ताले पूरा सेंटेंस दिया जिवो जदी किछि पार्ट सफर करछि ताले जहा पार्ट थिबो ताहले आपण से पार्ट जदी आपण को रेमिशन कराइतला किछि कंडीशन रे किंतु से कंडीशन जदी आपण वायलेट करछुनी ताले आपण से जतिक पार्ट पहुंची इम्प्रिजनमेंट रो सेतिक आपण को सफर करिया को पड़िबो बोली कहला 229 रे कहला बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बाउंड टू अपीयर इन कोर्ट जदी से अपीयर करूनी कोर्ट रे ताले 229 ए रे पड़िबे बोली कहला एटा होची इंपोर्टेंट 228 रे जदी गोटे आपण को तो कंटेम्प्ट पावर नाही हाई कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट छडा किंतु जदी आपण डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल रे गोटे मेंबर आपण गोटे जज को इंसल्ट करचंती देन इन दैट केस और इंटरप्शन करचंती जज रो प्रोसीडिंग रे देन 228 रे पड़ी परिबे 220 इज अ वेरी इंपोर्टेंट पावर ऑफ एट लीस्ट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस नले आपण हाई कोर्ट को लिखिबे हाई कोर्ट नै परंती 228 रे कोन करचंती जदी आपण डिस्क्लोज करचंती आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस लाइक रेप एटसेट्रा सेठी आपण पब्लिश करचंती ताका नेम किबा प्रिंट करचंती ताहले आपण को पनिशमेंट दे परिबो 228 ए रे तापर आसी कॉइनेज यस कि अनम्यूट कर छुटी म्यूट कर दियो सुन सा हेलानी जानि छी बहुत हे गेलानी बराउ टिके यस सागर के मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ यस ओके आउ टिके आउ बेसी नहीं आउ 10-15 मिनिट्स एंड विल बी डन हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी टू खाली आराम करिया बिकॉज़ दैट विल टेक सम टाइम ओके एवडा सब छोट खाली बॉडी की जीवा कथा तणु जल्दी जल्दी कर दो कॉइनेज अगेंस्ट सेंती असला कोन गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्टैम्प और कॉइनेज अगेंस्ट रे सेक्शन 25 75 रे देछि जे ए सब रे एनहांस पनिशमेंट मिली परिबो 230 रे कॉइन कोन कहला मेटल यूज्ड फॉर टाइम बीइंग एज मनी आ इंडियन कोन जोडा कि इंडियन रे यूज होछि एज मनी ताको कहबा हमें इंडियन कॉइन ओके काउंटरफिट करिया पई एथि देला चेंज इन वेट और कंपोजिशन करिया पई एथि देला आ अल्टरेशन इन अपीयरेंस कला एथि आपण जानछन गोटे कॉइन रे जति कि मेटल यूज हेताए से मेटल रो वैल्यू होछि दैट मच अमाउंट सो 1 रुपी कॉइन रे जति कि मेटल यूज हेछि से मेटल रो वैल्यू इज 1 रुपी ओके 5 रुपी कॉइन रे जति कि मेटल यूज हेछि से मेटल रो वैल्यू इज 5 रुपी तो सेमती ही कॉइन बना जाय नाउ असला कोन जे यस जदि काउंटरफिट कॉइन करछन्ती 231 रे जदि इंडियन कॉइन काउंटरफिट करछन्ती 232 रे सेमती मेकिंग सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन असला 233 रे और मेकिंग सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन असला 234 रे सेमती पोजीशन ऑफ मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन और इंडियन कॉइन असला 235 रे और जदि एबेट करछन्ती इन इंडिया काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन आउटसाइड ऑफ इंडिया बाहर करछन्ती किंतु आपण इंडिया रहि के एबेट करछन्ती ताले विद इन इंडिया धरा जिवो डीम धरा जिवो जे विद इन इंडिया करछन्ती इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन 237 रे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन 238 रे ताबरे डिलीवरी ऑफ कॉइन विथ नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट कॉइन सेटा असला 239 रे knowing that it is Indian coin 240 रे delivery of coin as genuine which when first possessed delivered did not know to be counterfeit asila 241 रे possession of coin by person who knows it to be counterfeit when he possessed is 240 रे और possession of Indian coin by person who knows it to be counterfeit when he possessed is 243 आपण जानि छन जे counterfeit तापर जे धरचुंदी ताले 242 243 रे रहिबे जदि आपण ताकू possess करचुंदी सेंदी 244 रे कहला
जे कि पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट जदि से वेट रे चेंज करछि किबा कंपोजिशन रे चेंज करछि 240 रे अनलॉफुली टेकिंग आउट ऑफ एनी मिंट कॉइनिंग टूल और इंस्ट्रूमेंट ताले 245 रे fraudulently or dishonestly perform करूचंती any operation on coin ताले 246 रे आउ fraudulently or dishonestly performing any operation on Indian coin ताले पड़िबे आपण 247 रे alteration in appearance coin रो रूप फतो बदलुचंती कोन करचंती जे alter करचंती appearance of coin with the intention that it shall pass as coin of different description आपण देखिथिबे 1 रुपी coin रे एमती गोटे चेंज कर दिंतु सेटा एमती 5 टंकिया देखा जिवो छोटो 1 रुपी कॉइन को सेमती करथिले किंतु देले शेप रे टिके चेंज थिला और आपण देखंतु 2 रुपी कॉइन को बडो अछि ताकु माने 10 रुपी भलिया कॉइन कर दियंती सो एठी जदि आपण करचंती कॉइन को करचंती ताले 240 रे बट जदि आपण इंडियन कॉइन को सेटा करचंती ताले आपण परिबे 240 248 रे एटा पडिबे 249 रे ओके 248 एंड 249 आसी गला तापर असला कोन आसला 250 delivery of coin possessed with knowledge that it is altered जदि खाली coin रे करछन ताले 250 Indian coin respect रे कहले 251 सेमती possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed ताले जदि खाली coin रे करछन 252 but जदि Indian coin रे करछन ताले 253 सेमती delivery of coin as genuine when you first possessed delivered did not know it to be altered ताले आसीबो 254 रे सेटा आसला तापर आसला गवर्नमेंट स्टैम्प रेस्पेक्ट रे जो आपनकर हेतला आपनकर जो कोन स्कैम तेलगी स्कैम रो ए गवर्नमेंट स्टैम्प अगेंस्ट रे जंती मेजर ऑफेंस थला काउंटरफिट स्टैम्प तयारी करबा 255 रे पोजेशन करबा 256 रे सेलिंग करबा और मेक करबा इंस्ट्रूमेंट दैट इज 257 रे सेल करबा काउंटरफिट स्टैम्प 258 रे पोजेशन ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प 259 यूजिंग इट एज जेन्युइन नोइंग इट टू बी फॉल्स 260 सेमदी यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प कोन कहला जदि रिमूव्स गवर्नमेंट स्टैम्प फ्रॉम डॉक्यूमेंट ताला असला 261 रे तापरे यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नो नीड टू बी यूज्ड बिफोर आपण देखते बेले बेले जो गवर्नमेंट स्टैम्प को कटा जाय कटा बेले 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 आपण जानचंदी गोटे इंक रे जो कटाई थाए से गोटे अछि मटेरियल अछि आपण से स्टैम्प को थरे पके देबे से इंक गुडा छाडी जिवो पुनी स्टैम्प को सुखै कि ताको यूज करा जाय टके 2 टका रेडा वैल्यू होबनी जदि स्टैम्प गुडा 5000 10000 टका स्टैम्प रे दिस इज मच वैल्यूएबल और इरेजिंग मार्क डिनोटिंग स्टैम्प ऑलरेडी यूज्ड ताकू जदि करचंदी ताहले आपण 263 रे पड़िबे फिक्टिशियस स्टैम्प करी कि जदि तयारी करबा बिकिबा और पोजीशन रे रखिबा एनी फिक्टिशियस स्टैम्प ताहले आपनकर पड़िबे कोथरे एथरे भी देला आपण एथरे पड़ी पारिबे तापर असला वेट एंड मेजर अगेंस्ट रे कोन जदि फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू वेट होची 264 रे फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स असला 264 रे पोजेशन कले आपण वेट्स एंड मेजर्स सच फ्रॉडुलेंट ताले असला 266 रे मेक और सेल करबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेट और मेजर असला 267 रे तापर असला पब्लिक हेल्थ सेफ्टी डिसेंसी मोरल 268 रे कहला न्यूसेंस जदि आपण गोटे एक्ट और इलीगल कमिशन करचंती कॉजिंग इंजुरी और डेंजर और अनोयंस टू पब्लिक ताले आपण पड़िबे 268 रे कॉमन एग्जांपल बड़ लाउड म्यूजिक रे बजेबा ए सब करबा असलेबा एतरे पड़िबा पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और इमोरालिटी सेमती कहला इन्फेक्शन एडल्ट्रेशन पॉल्यूशन पई अछि रोड सी नेग्लिजेंस पई अछि आ ऑब्सिन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्सिन एक्ट सॉन्ग पई भी इमोरालिटी पई अछि नाउ पब्लिक हेल्थ रे कोन कहला इन्फेक्शन कॉज करबा नेग्लिजेंटली इन्फेक्शन स्प्रेड करबा अछि 269 मैलिग्नेंट एक्ट टू स्प्रेड इन्फेक्शन 270 आउ नॉट ओबेइंग रूल्स ऑफ क्वारंटाइन आपन जो क्वारंटाइन रूल्स हेतला ताको जदि ओबे न करछन 271 सेमती फूड एंड ड्रिंक रे एडल्ट्रेशन करबा 272 सेल करबा एडल्टरेटेड फूड 273 आउ ड्रग्स एडल्टरेट करबा 274 मन रखंतु 270 टू 273 नॉर्मली आईपीसी रे जो हमरो सीआरपीसी अनुसार एटा होची बेलेबल एंड ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बट हम ओडिसा अमेंडमेंट हिसाब रे दिस इज नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस ओके नाउ 275 सेल ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग्स असला 275 सेमती 276 असला सेलिंग डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन दैट इज कॉल्ड 276 जदि आपण पॉल्यूशन करचुती ताले जंती आपण टेलमा 40 आपनकर बीपी मेडिसिन को एडल्टरेट करा होतला और सेल करा होतला ओके देन एटमॉस्फेयर को जदि पॉल्यूशन करिवो वाटर को पॉल्यूशन कले 277 रे जदि आपण वॉलंटरली वाटर को किबा पब्लिक स्प्रिंग किबा रिजर्वायर को आपण यू आर मेकिंग इट लेस यूजेबल फॉर इट्स यूज ताले आपण पडिबे 277 रे आउ एटमॉस्फेयर को जदि वॉलंटरली नॉक्सियस करचंती हेल्थ को ताले 278 रे आपण पडी पारिबे पब्लिक सेफ्टी रे सेमती कोन केला रोड सेफ्टी रे जदि किछि
negligently rash driving करचंदी 279 रे, danger in public way 283 रे, sea safety रे कोन कहला सेमती rash navigation कले 280 रे, exhibition of false mark और बुए जो थाए जोठी मार्क करा जाए सी रे कोपटे को ताला आसला आपनकर 281 रे, ओवरबोर्डिंग करेवा जति जण जीवा कथा तार जदी अधिका से बोट रे नै कि जाउछनी ताले 282 रे, ओके आउ डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे 283 रे बोली कहला। द नेग्लिजेंस रे पॉइजनस सब्सटेंस नेग्लिजेंस रे 284, फायर पाई नेग्लिजेंस रे 285, एक्सप्लोजिव पाई नेग्लिजेंस रे 286, मशीन पाई हेले 287, बिल्डिंग पाई हेले 288, आउ वेसल पाई हेले 289। केते पनिशमेंट अछि 6 मंथ्स फाइन और पनिशमेंट अछि 290 रे रेसिडुअल न्यूसेंस और 291 रे कंटीन्यूअस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन और स्टे अछि, ओके। तापर आसिला इमोरालिटी, ऑब्सिन ऑब्जेक्ट जदी सेल करचंदी ऑब्सिन बुक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडवर्टाइज करचंदी 292 और सेल ऑफ ऑब्सिन बुक्स टू पर्सन अंडर 20 इयर्स इज आपन 293, ऑब्सिन एक्ट सॉन्ग करिया को 294 इन पब्लिक प्लेस और 294 एला कीपिंग लॉटरी ऑफिस अदर देन स्टेट लॉटरी और ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट जदी निजर लॉटरी फुटी चलोचंदी ताले आसिला आपनकर 294 ए। अच्छा कहि परिबे जे ऑब्सिनिटी डिटरमिन करिया पे गोटे इंपोर्टेंट टेस्ट कोन, एनीवन? क्लीन टेस्ट। यस ही क्लीन टेस्ट, वेरी गुड। आ गोटे मैन ऑफ क्लैफम ओमनिबस टेस्ट अछि, बीरा टेस्ट अछि, ओके। जेतले आईपीसी रेगुलर कोर्स रे पढिबा ए सब हमें पढिबा बट एबे तू जाउने। लास्ट चैप्टर फॉर टुडे इज रिलीजन रेस्पेक्ट रे 295 रे जदी इंजुरी करचंदी पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप को 295 रे, जदी एक्ट करचंती डेलिबरेट और मैलिशियस विथ द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स और बिलीफ 295 ए रे, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली 296, आउ बरियल प्लेस को डिस्टर्ब करिया 297, आउ गोटे जो कहितली इंडिग्निटी टू ह्यूमन कॉर्पस आपण जो नेक्रोफिलिया ए सब अछंती माने देयर आर पीपल हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेड बॉडीज, देयर आर हीनियस पीपल लाइक दैट, सो सेठी आपण 297 रे भी पढी परिबे। 298 रे wording sound that hurt religious feelings asila apankara 298 re। so this is our total ajiro discussion, au aji ame discuss kariba nahi kahi ki na this is done, eti ki apan janantu au baki kali puni discuss kariba। I think au besi nahi amara section 298% पहुंची गले, बाकी 299 रू 511 kali ame sardava, okay। So thank you all. You have a test today as well, scheduled at 3:30. So I don't want to take much of your time. You may revise and then prepare, appear the test. Everyone at least who is appearing the prelims this year must give the test. Others, if they don't want, they can give it at home. They can just try the luck at home. No issues. Okay. So that's all for today. Thank you everyone for patient hearing. How many people stuck with me for the entire time? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 26 26. We started with 30 odd and we ended with 26, which is a good enough number. Okay, thank you everyone, and we will meet tomorrow and complete IPC.